Welcome once again to all the audience over here. And I would call upon stage one by one our worthy speakers to throw some light on the exile induced demographic changes and their social impact on our community, that is the KP community. So first of all, let me welcome Shashank Razanji on stage and let's have his pearls of wisdom. वहीं से कर लेते ना, that is better. So thank you very much, ma'am. And I think the way you started, you have energized all of us. बहुत बहुत शुक्रिया. जब पंडिता साहब ने मेरे को फोन किया था, because I just want to thank पंडिता जी for this kind of event, because it's a very unique event. Once people like him think of the future generations, where we feel the culture is actually degrading in terms of our mindsets. And although, see, it's like globalization is happening, so that impact is there. But what we have earned through this culture is something very big, which definitely we can never forget. We should never forget. So, as a part of my speech, जब पंडिता साहब का फोन मेरे पास आया था, तो मैं लूप के लाइन बॉर्डर या थर्ड में it's basically the notion. आजकल स्टूडेंट्स ऑफ नोशन कि अशी करान सुष्ठी. That is the biggest reason they don't care for the culture. कैसे कि अगर तो एक कम्प्लेक्शन हो कि भई करान सुष्ठी, तो करें उन्हें एक्सेप्ट ब्याग चीज नहीं. यो सर्कल बोर्ड misconception. So that's my speech, listeners, where I will try to connect what I want to say and how I want to communicate to the younger generations. Because if we don't touch their mindset, if we don't touch their notion, where they're going wrong, it's difficult for us to bring them back to our culture, which we are missing in our younger generations. So that is the part of my script. So once again, good evening, everyone. So first of all, we have respected Sushilji. So it's a big respect for me to share this dice with him because he's an eminent person of our community. So, sir, thank you very much for giving me this opportunity, and definitely to the organizers, Pandita Sahab especially, because I requested him to be part of this event and he accepted it with the whole heart, and he definitely encouraged me to throw some light on the Kashmiri youth. When I was just trying to write something for this event, the first thought came to my mind is, are Kashmiri Pandits really settled? Most of we feel that we are settled, but I feel we are yet to settle back. So this is where my topic revolves around. So just to take you through, when I talked about the notion where youth feels that whatever they are thinking is right, I just want to put a light onto that because it happened with me as well. Couple of years back, I met my old friends, which were there with me in Kashmir, in Jammu, and then in school, and even up to the college level, we used to meet, not frequently, but yeah, regularly, I would say. But it was after almost 16 years, because one of our friends got settled in US, one of my friends is in Mumbai, and I'm here in front of you in Gurugram. So we met at a marriage of my friend's sister. So it was, nowadays we call it reunion. Asgesari Jagja Taite, Goda Sir, Pran Kastala, Gaska Askaran, Gaskara, Hodes Gindan, Yes Karan, we cherish the moment actually. लेकिन where that notion hit me कि जब एक topic आया कि अरे यार migration was like blessing in a disguise for us. ना था सब कशीर कुंजाए या सब teacher या सब clerk. आज तो USS में सोचो Fortune 500 company में जिची Bombay production house में अगर कशीर आसा ऐसा सब तकी तुमन गलियन में. Idea was like yes, ये तो सही कह रहा है. And this is where this culture is actually moving out of our mind or out of our sense because we feel that we are settled. But this was something which I took it in a different way. I thought like, yes, whatever we are saying is right, but how did this happen? I request all of you to just go little back of 1990, that part of Kashmir, because I was not, I would say young, but I was a teenager at that time. But I still remember
We used to go for picnics to Shalimar Bagh. Every Ashtami we used to be at either like Tulmul, Shankaracharya Parvat on some events. And definitely, I think today we say we are settled, but that joy, what we used to get in those ceremonies or at those occasions, I think we are not getting. Then when we come to 1990, then it is a real pain which comes to our mind. What happened to our community? Today, my generation is saying we are lucky and we are well settled, blessing in disguise. But it was not easy for our parents, for our grandparents. They have gone through a lot of pain to make us say this thing कि बड़ा अच्छा हुआ यार हम बाहर आ गए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो लेकिन ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ कहां से किसने किया और कैसे हुआ when I see lot of I would say genocide is word for Kashmiri Pandits, but when I talk about displacements, there are a lot of societies across globe who have been displaced, and I think the context was set in the beginning itself. The Zoroastrian, I would say, kind of displacement, जिनको हम पारसी कहते हैं, and now there are only 50,000 Zoroastrians, almost vanished. There will be a time when there will be no Persian, the Parsi kind of community. Will that happen to Kashmiri community? So I just want to tell the youth, today we are saying we are well settled. We are well settled because of our culture. Now, how to correlate that with culture? It's very important to tell you how. See, if today that happens to ourselves, what happened to our parents और our grandparents कि जब उनको रात को 2 बजे बस में या ट्रक में लदना पड़ा और वहां से भागना पड़ा जिनके जेब में 500 रुपए थे कपड़े 2 दिन के थे एंड दैट्स ऑल अगर हमारे साथ वो हो जाए तो probably we all will be taking antidepressants every day or many of us will suicide or go like took arms or do anything wrong. But why it didn't happen at that time? That's the question. That's where I think our culture is what played a big role in our life. There are many factors to our culture. First one, the spiritual part of our culture. Even when we were in camps, even today when I think of Moti camp, probably I will get emotional. I couldn't see Kashmir Files. Even the trailer made me to cry. I don't know whether it was truth or not because I have not seen it. I have no courage to say it now because I've seen my relatives residing in camps, how they were doing it. They had never seen harsh weathers. They were used to cold weather. And weathers like 42 degree, 46 degree, it was a havoc for them. So today, the blessing, what we are saying, blessing in disguise, is not blessing in disguise. It was those people who survived and made us to survive and settle down in a good way. So that's spirituality. Why spirituality I'm talking about is none of us took the bad path or the wrong path. Generally, it happens. Once you are displaced, many of the young people become thieves. They try to snatch the opportunity which is lying in front of others because they are deprived of that. But it didn't happen with us because what we had a kind of everyday evening, wala aarti karo, Bhagwan ka rachi sore. This was what was taught to us. It was not it gas when mokles. Wala aarti karo, mat merj bhavani rachi. Shankar chi suit makar kar parnas kunjan askaro sori panai. This is what they have gone through. And that is why today we say we are settled. The second part was relations. We had a lot of belief in relations. The best example is today itself. Although I had written some words just to make it, because I don't want to make this lecture emotional. It's basically to make youngsters connected to our culture, so I don't want to make it emotional. I have put something which can make it a little lighter. So I hope all of you will relate to it. Today, when we go to the marriages in Jammu, or even to that extent in Delhi or anywhere in India, where
all our relations meet up. Suddenly, you will find somebody coming to you, "तो चुका हूँ सुन लड़का," as if he or she knows you right from your childhood and you don't know him or her. But the kind of warmth, the way that person will come to you, "So chuka hum sun ladka," you will feel like, "Oh, yeah, I think she's known to me." This was the essence of our culture. This was the essence of our what we had earned through being strong in terms of our relations. Merge तो जाना क्यों मैं चर्न merge जाने में बात से merge तला वाला नॉर्मल बात से bird merge. It happens with me also many a times. For me, like I don't know anything, and suddenly three ladies calling me, "Yeah, well, you जाओ सुख तम साथ नंगे नजान हो रही हो." And I have to, sorry, I can win what I want. It happens. This is what I learned in last 2 years because that line was clicking me when my friends and even I was agreeing to them. He had blessing in disguise. We are well settled. Now I hope you all will feel we are not settled. What made us so settle is our seniors, our elders. But contrary to that, what is happening? We are becoming more individualistic. We are not caring for those elders who made us to reach to this level, where one of my friend is in US, well settled, having his own bungalow, which we never thought of. I am settled here in Gurgaon, but unfortunately, we are not related to the way we used to relate at that moment. That's why I said, if that kind of thing happens now, we all are gone. And it is the need of our that we should get back to our culture if we want to have same strength, everything like same. So, in fact, going ahead, like in terms of that, like in earlier times, the kids, at least two artis, where when kids used to be very happy, they used to wait because generally Kashmir used to have a lot of part puja. But at the end, either it should they used to wait for that. Jai Jagdish. And every kid will be in the front. And they will like be shouting, "Oh, Jai Jagdish Hare." Because they were proud that out of so many things they know Om Jai Jagdish. That means right from their childhood, they were taught that you should recite something related to God. Because you need to have some direction in your life where you can put faith onto it. So that was, or other one was Gori Amba Ambara. That was once you are little elder to Om Jagdish kind of age group. The next one used to be Gori Amba Ambara Ki Amide, like that. So that used to be our progression. Even just while we are taking cover. So one of the uncle was saying, "अच्छा sorry, that's very Bharyan like Kursi was the part." But in Kashmir, like from childhood, we used to recite those artis, and then slowly, gradually, we used to learn the part also. And once we used to go to mandir, there used to be many people around us doing that part, and we used to be part of that. And that spiritual part, then 1 hour, 30 minutes, used to basically take out all the strain from our mind and make it free and refreshed. And believe me, that is the only reason we could survive the genocide. It was the most dreadful genocide ever, where I had seen people living in bungalows, having big apple gardens, orchards, but they were intent with no money in their hand. Despite of that, today this generation is proudly saying we are settled. But if this settlement is not backed up by culture, of Kashmiri Pandit culture, I would again say the topic of this speech is very clear. Are we settled or not? I think we are not. So this is where I want to start the context of today's event. And Sushilji, I have seen always him on TV. I have seen his debates. And
I think Panta Sahab has organized in a big way to bring him on this platform because the way he speaks related to our community in front of 1.4 billion people of the country, that is phenomenal. And we have the young chaps sitting on both of our left and right, handsome, new styles. We should definitely embrace them, support them. But yes, I think whatever I've said, I think they can make it connect. Because see, if I have directly landed on to कि ये गलत हो रहा है, they would have been little on a backseat. I when Bosnaman chalo view ganda, pat karo panen kam. I never wanted to do that. I know problems are there. Today marriages are happening late, which is very very dangerous. It's not that we should not settle down, but we need to take care of scientific reason as well. Even doctors, gynecologists, dietitians, obstetricians, they all say everything has some age. So my request to the younger generation is that please at least follow the medical guidelines, even if it's not the social guidelines, because that is related to our education. It should not happen that what our Parsi brother had written and sent a speech to us. We should not one day be part of that speech. ये इम्पोर्टेंट है कि ये इम्पोर्टेंट जब सोच पगा जब प्रश्न मीटिंग मत के कुछ करो दो मिस इंसान पागल बनावन Divorces are growing. Why? As I shared, the spiritual part is getting less. We are becoming more individualistic. पहले जो होता था कि भाई एक दूसरे को अगर झगड़ा भी होता था with some relations around us, we used to actually release out the kind of burden, but now we don't have anyone where to release out. And ultimately what happens? We break our lifelong relations. We say marriage is a relation of 7 janam. Today it is not even 1 janam. This is not KP culture. We never thought of such culture in our lifetime. Why it is happening? Because we are not with our roots. If we go back to our roots, that roots don't restrict you to do puja part 24 hours. We have never done it. Neither my parents nor my grandparents. But we had a schedule for everything. Morning, it has to be part puja. Relation, whenever it is a relation time, we used to get time out of our offices. We used to be there in all good times and definitely on bad times, even not in good times. So please, my request to the younger generation is please come back. Don't think it is a foundation. It is for your betterment. The best example is we ourselves. What we have gone through, the pain we have gone through, and where we are today. We are all well settled. We are not like any other kind of genocide where actually that culture vanishes out or finishes that community. We were the survivors. And because of what I have shared already in my speech, those were the reasons, we were the survivors. So my request, earnest request to all the young generation, because this is the platform what Panta Sahab told me to set the platform is for the younger generation. Please support the culture. Thank you very much. Thank you so much, Shashank ji. Very rightly said, very well said. So for me also, in fact, I also believe that displacement of any community can never be a blessing. And what Shashank ji said, that it was because probably we were connected to our roots, we were connected to our culture, and hats off to our elders that they probably inculcated. They try to inculcate all these things in the younger generation, but as Shashankji said, today's younger generation feels that they are self-sufficient. They probably don't require any kind of help or vis-a-vis maybe the spiritual kind of help or something related to cultural help, right? But this is very important to understand that culture is the root. And if we are connected to our roots, so definitely, yes, we are going to go ahead and ahead and ahead and forward in our lives. Right. So I would just point out the thing which Shashankji also pointed, that another thing is that we are losing the connect. We are losing the connect. Right now, today's generation, they are not connected to their maybe relatives. And the biggest reason for that is because we probably don't have any relatives.
Let's not talk about second cousins and third cousins. We even don't have the first cousins nowadays. Why? Because we either have two children or probably one child. Right? So we don't have any Masi, we don't have any Bua, we don't have any Chataji. So as we said, even if we want to vent out the things, we go to and probably tell all these things. So that is why we are busy within ourselves, and that's how we lead our lives nowadays. So it's a big question to ponder over, especially the younger generation. I go by father, actually sure. But the younger generation has to think about it. And that is why this platform has been set. So thank you once again, Shashankji. And very quickly, I'll just tell you about Shashankji. I'm sorry I couldn't do it in the beginning. Shashankji, born at Habakadal, Srinagar, migrated to Jammu in 1990. Presently residing at Gurugram, he completed his bachelor's in mechanical field and post that MBA in the field of sales and marketing. Started working in Fortune 500 MNC and presently he is the general manager sales for Central India. Also a certified goal success life coach from American University along with EQF, which stands for European Qualification Framework Level 5 holder in leadership and management. He has traveled almost all parts of nation and indulged in various cultures. However, he feels Kashmiri Pandit culture is the best of all, no doubt about it. He credits Kashmiri culture for no casteism, no dowry, no discrimination in a boy and girl child, and above all, he values education, which probably every Kashmiri Pandit does. Also, the sense of togetherness while KPs assemble for dharmic occasions and even marriages is his delight, which was reflected in his speech also. So thanks once again, Shashankji. Now, we have some young speakers also here today. Right? So the younger generation is there. The future leaders, the future visionaries are with us. So let's see that how they aspire to inspire. Let's see what kind of visions do they hold, and let's see how their vision embodies our hopes and ideas. So I would request Vanshika Bhatt to please shed some light on today's talk. Vanshika Bhatt. हेलो गणनीति सायनी नमस्कार मारा थैंक यू सो मच दीप्ति जी first of all thank you so much Ajay Pandita ji and everybody who have organized this for having me here ये I guess one of the unique seminars I can say है because मैंने अभी तक मेरी जितनी मैं 21 साल की हूँ जितना मैंने अभी तक इतने सालों में देखा है I haven't attended any such seminar on such a topic. I can say cultural events मैंने काफी attend किए हैं, host किए हैं, but ऐसा मैंने कभी नहीं किया. And I अगर दिल की बात कहूँ I always wanted to address this topic. काफी points मैंने note down करके रखे थे. I will just speak like a layman. जैसे एक youngster जो मेरे दिमाग में या फिर मेरे age के young बच्चों में शायद कुछ thoughts हैं. I'll just speak about that. So first of all, Sushil ji, it's an honor to share the stage with you. Shashank ji, the way you spoke, it was wonderful. And aapka ek word, I agree with it. So I'll just share a few more words and my fellow youngsters here. So first of all, इन सारी चीजों का I guess जो जैसे अगर हम बोल रहे हैं आज की young generation is not connected to spirituality या फिर they are not very committed to good relationships I can say और they are like बहुत सी चीजें बहुत से factors हैं I guess main reason इसका ये है एक चीज ये है काफी see if अगर एक छोटा सा sapling है I'll give an example if there is a very small sapling जो एक particular environment में adapted है already उसके roots different है एंड देन आप उसको उठा के कहीं और एनवायरनमेंट में भेज दोगे जो उसके एक्चुअली नेचुरल हैबिटेट उसका है ही नहीं एंड देन यू विल एक्सपेक्ट दैट सैपलिंग टू ग्रो इनटू दैट एग्जैक्ट प्लांट जो वो ग्रो करना चाहिए बेसिकली सो दैट इज नॉट पॉसिबल फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि हर उस सैपलिंग का बेसिकली रूट डिफरेंट है बट जब आप उसको एक अलग एनवायरनमेंट में ढाल दोगे तो क्या होगा कि वो टाइम टू टाइम इवॉल्व करेगा उसी एनवायरनमेंट को लेके So, उसमें सैपलिंग की गलती नहीं है गलती है डेफिनेटली है
But you can't 100% blame that. See, this is something जिसमें हम शायद youngsters can't blame the elders and elders can't blame the youngsters. It should be a two-way communication, I guess. क्योंकि बहुत से इसमें factors है. तो एक चीज ये हो गया कि जैसे मेरे जैसे I'm 21 years old. I was born after the forceful migration happened. So I was born in Jammu. Then एक साल बाद we came to Ghaziabad and तब से we are living in Ghaziabad only. Even my first birthday was celebrated there only. So from 21 years we are in Ghaziabad only. So the thing is that हमारे जैसे जो बच्चे हैं जो आफ्टर माइग्रेशन पैदा हुए हैं जिन्होंने एक्चुअली वो सारी चीजें देखी नहीं है उनमें से 80 to 85% बच्चे जो हैं उनका आज अगर आप देखेंगे कि रहन सहन कैसा है या फिर इवन आई गिव अ स्मॉल एग्जांपल अगर आप अभी 10 यंगस्टर्स को उठा ले उनमें से पूछे उनको कि लेट्स गो टू सम भजन कीर्तन कुछ भजन संध्या करने बैठते हैं 10 में से मुझे लगता है एक होगा जो हाँ करेगा बाकी सब बोलेंगे कि चलो ठीक है 5 मिनट कोई नहीं बैठ पाएगा उस भजन संध्या में एंड यू टेल देम लेट्स गो टू अ क्लब लेट्स हैंग आउट 10 की जगह 100 आ जाएंगे बच्चे द रीजन इज दैट कि वेस्टर्नाइजेशन यू नो ये प्रॉब्लम सिर्फ कश्मीरी कम्युनिटी का नहीं ये प्रॉब्लम हर यूथ का है आज के टाइम पे वेस्टर्नाइजेशन ने इतना इन्फ्लुएंस कर दिया है हर एक यंगस्टर को इस टाइम पे इट्स अ बिग थ्रेट कोई इस पे ध्यान ही नहीं दे रहा नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस बट लिटरली एक टाइम ऐसा आएगा दैट we'll get to know कि ये चीज हमें शायद पहले ध्यान देना चाहिए था यंगस्टर्स पे एंड वी शुड हैव स्टार्टेड यू नो shaping the young minds at a from a very early age तो बात वो है तो वेस्टर्नाइजेशन वेस्टर्न कल्चर ने इतना इन्फ्लुएंस कर दिया है दैट टुडेज जनरेशन इज dwelling into that western culture एंड जब भी बात आती है अपने कल्चर की तो दे फील दैट एक सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनको आ जाता है कि अरे यार मैं तिलक लगा के जाऊंगा तो कैसा लगूंगा मैं अजीब तो नहीं लगूंगा अरे यार मैं अगर कुर्ता पजामा में चले जाऊंगा तो कैसा लगूंगा अजीब तो नहीं लगूंगा मतलब दे हैव टू गो विद द ट्रेंड सबके साथ चलना है सबके साथ गो विद द ट्रेंड अब इसमें गलती किसकी हो रही है कहाँ पे लैक हो रही है चीजें सो द थिंग फर्स्ट थिंग इज दैट एक तो जो बिल्कुल डिफरेंट क्योंकि अलग एनवायरमेंट में पले बड़े हैं उनका दे हैव ग्रोन इन अ डिफरेंट एनवायरमेंट अलग लोगों के बीच में है दूसरा चीज ये है आपका घर में एनवायरमेंट कैसा है फर्स्ट ऑफ ऑल सी मैं भी उसी जनरेशन में आती हूँ बट आई कैन से आज के टाइम पे जितने शशांक जी आपने पार्ट बताए वो सबके सब मुझे भी याद है तो सी आई नॉट बोस्ट अबाउट दैट इसमें कोई प्राउड फील करने वाली चीज नहीं है ये इसमें इनफैक्ट ये बहुत बेसिक चीज है ये हम सबको आना चाहिए तो इसमें कोई प्राउड फील करने वाली चीज नहीं है कि मुझे ये आता है ये आना ही चाहिए सबको तो थिंक इज दैट कि मैं क्यों कर पा रही हूँ मुझे क्यों ये सारी चीजें याद है एंड व्हाई नॉट अदर्स व्हाई नॉट फ्यू अदर पीपल तो थिंक इज दैट घर पे एनवायरमेंट कैसा मिल रहा है मुझे बचपन से याद है मैं अगर अपना बताऊं आई वॉज वेरी यंग 1-2 साल की जब से मुझे अपने सेंसेस फील हुए व्हेन आई स्टार्टेड सेंसिंग थिंग्स एंड मैंने चीजें समझना शुरू किया फ्रॉम दैट एज ओनली मेरे घर पे एनवायरमेंट वाज टोटली डिफरेंट we also live in a nuclear family only हम joint family में नहीं रहते everybody lives in Jammu we live in Ghaziabad so we are like 4 people my father mother me and my younger sister so we are 4 of us but still हमारे घर पे मेरे पेरेंट्स ने हमेशा से ये कोशिश किया कि उन्हें पता था कि बच्चा बाहर जाएगा तो कश्मीरी कल्चर के बीच में नहीं रह पाएगा उन्हें वो पता था दे न्यू कि हम कश्मीर में नहीं है तो वो कल्चर उसको नहीं मिल पाएगा बाहर जाके तो दे ऑलवेज ट्राइड कि जो कमी शायद उसको बाहर मिलेगी वो हम घर पे पूरी कर देते तो बचपन से ही जब से मुझे सेंसेस हुए तब से उन्होंने मुझे सारे पार्ट जब भी पूजा होती थी दे यूज्ड टू कॉल मी बोलते थे बैठो आओ सुनो तो बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि मैं भी मुझे बचपन से इंटरेस्ट था स्पिरिचुअल आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग आई एम आल्सो यंगस्टर मैं भी कभी कभी बोर हो जाती हूँ आई गेट बोर्ड मैं कहती थी कि क्यों मुझे नहीं बैठना आई वांट टू गो आई डोंट वांट टू लिसन बट थिंग इज दैट जब उन्होंने फोर्स किया मैंने मानी बात 2 बार 3 बार 4 बार बोर हुई मैं बट 5वीं 6ठी बार से मुझे भी इंटरेस्ट आने लगा और उसके बाद से इट बिकेम अ हैबिट अब बात हुई कि मैंने कभी अपने आप पे फोर्स नहीं किया वो सारे पार्ट या फिर वो सारी चीजें याद करने को मैंने सुना इतनी बार मैं पूरे टाइम सुनती रही तो वो याद हो गया इट्स लाइक दैट आप कोई गाना 10 बार सुनेंगे तो आपको याद हो ही जाएगा आप कितनी भी कोशिश करें नहीं याद रखने की याद हो ही जाएगा तो एक फैक्टर तो ये भी है कि घर पे एनवायरमेंट कैसा है ऐसे बहुत से यंगस्टर्स हैं आज के टाइम पे जो बहुत ज्यादा सोशली एक्टिव हैं अगर आप देखेंगे वो अगर इतना अच्छा कश्मीरी बोल पा रहे हैं तो लैंग्वेज का हमारा बहुत बड़ा इशू है
अभी अभी तो चलो इट्स फाइन, बट हमारे यंगस्टर्स में लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू। यंगस्टर्स छोड़िए, हमसे जो बड़े वाले जनरेशन भी है जो जल्दी कश्मीर से निकल गए थे, आप उन्हें कश्मीरी बोलने को बोलिए वो भी नहीं बोल पाएंगे सही से। तो इट्स एक्चुअली ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। ये बहुत दुख होता है मुझे जब मैं ये चीज बोलती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ जब भी मैं चाहती हूँ, जैसे अभी आई एम एनरोल्ड इनटू मास्टर्स, तो मैं गुजरात में थी, आई एम डूइंग माय मास्टर्स फ्रॉम गुजरात। तो फिलहाल आई एम इन दिल्ली ओनली। गुजरात में आई मेट few people. One of my friends was from Tamil Nadu, and he's also of my age only, 21 years. To my surprise, that person knew that person had read every single Puranas, Vedas, every single thing that our Hindu culture has, every single thing. And वो भी 21 साल का बच्चा ही है, इनफैक्ट मुझसे भी कुछ महीना छोटा ही है वो। उसे अपनी लैंग्वेज तमिल प्रॉपरली आती है, उसे अपने कल्चर के बारे में एक एक चीजें पता है। So to my surprise, I asked him that how do you, like, you are also so young. It's not like that you are elder than me, मेरे से 5-10 साल बड़े हो, so you are so experienced and all. How do you know everything about our culture? So he said, what is this about how do you know everything? He got shocked. He said, why don't you know about our culture? It's so basic. You should be knowing, no? इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि मैं क्यों जानता हूँ, क्योंकि इट्स वेरी सिंपल, ये तो बेसिक है, ये तो पता होना चाहिए हम सबको। तो आई आस्क्ड बट स्टिल, तो उसने बोला कि घर में बचपन से ही जब मैं छोटा था, माय पेरेंट्स यूज्ड टू टेक मी टू टेंपल्स, माय पेरेंट्स यूज्ड टू टेल मी द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर वेदास, आवर पुराणास। दे यूज्ड टू टेल मी that no, if he wants to become a research scientist, he has a scientific mind, but still that person is so spiritually connected and so active spiritually that if you sit with him for 5 minutes, you can't tell that he's from science background. You feel that he's from Sanskrit or something else. So the thing is like that. हमें शौक हो जाता है कि ऐसे कैसे दोनों चीजें बैलेंस हो रही है। एक्चुअली हम लोगों का ये थिंकिंग है यंगस्टर्स का, हमें आजकल चाहिए प्रूफ। वी नीड प्रूफ फॉर एवरीथिंग। अभी अगर हम बोलेंगे कि यंगस्टर्स को बोलेंगे कि एडम्स ब्रिज, यू नो, रामेश्वरम के एंड में देयर इज एन एडम्स ब्रिज, तो वो बोलेंगे यस यस वी बिलीव दैट बिकॉज दैट्स एडम्स ब्रिज। नाउ इफ यू विल से दैट कि वो राम सेतु है, तो वो बोलेंगे कैसा राम सेतु, राम जी का प्रूफ क्या है, यू गिव अस द प्रूफ, नो, यू नो। तो बात यही है, दिमाग इतना साइंटिफिक हो गया है हर यंगस्टर का कि उनको हर चीज का प्रूफ चाहिए। नाउ व्हेन यू, आप जब उनके सामने प्रूफ ला के रखेंगे, तो उसके सामने उनको फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि क्यों ये रिलीजियस चीजें माननी है जिसका कोई तथ्य नहीं है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, या फिर दुनिया नहीं मानती है तो मैं ही क्यों मानूं। एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो एक चीज ये भी होती है कैसे एनवायरमेंट में आप पले बढ़े हैं, उसका काफी मुझे लगता है 60 to 70% इफेक्ट तो उसी का पड़ जाता है कि आप कैसे एनवायरमेंट में पले बढ़े। एंड देन सम ऑफ दीज रीजंस, जो जैसे हमारा आज का टॉपिक है उसमें था कि डिलेड ओवर एज मैरिजेस, या फिर मैरिजेस डिलेड तो छोड़िए, हो ही नहीं रही हैं अब तो, क्योंकि मेरे खुद ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आई नो, मेरे ही रिलेटिव्स काफी हैं हु आर नॉट रेडी टू गेट मैरिड। आई डोंट नो व्हाई। तो आई टॉक विद देम, मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इज द रीजन, लाइक दिस इज अ बिग यू नो डिसीजन टू नॉट गेट मैरिड। एवरीबडी सी, getting successful, earning money is fine, but at least at a point you have to think about the stability also in life, you know, you have to get settled also. तो दे से दैट दो चीजें मैंने देखी, एक तो वेस्टर्नाइजेशन का हाथ इसमें भी है कि नहीं भाई डिलेड मैरिजेस से क्या जल्दी है शादी करने की, अभी पहले सेटल हो जाते हैं, एज थोड़ी होती है शादी करने की, ये तो बड़े लोग बोलते रहते हैं, सबकी ये थिंग है, नेग्लेक्टिंग बिहेवियर, यू नो, कि नेग्लेक्ट कर देते हैं, कोई ध्यान नहीं देना। दूसरा रीजन एक जो मैं भी फील करती हूँ है, जो आई गेस काफी यंगस्टर्स शायद मेरे से रिलेट कर पाएंगे, कि जो लोग बोलते हैं कि दे डोंट वांट टू गेट मैरिड या फिर लेट करेंगे शादी, 30 की उम्र में करेंगे या 30 से ऊपर होंगे तब करेंगे, वन ऑफ द रीजंस इज दैट जो लोग, जो उन यंगस्टर्स में से मैच्योर हैं, बेसिकली व्हाई डू दे डिनाई टू, या फिर व्हाई डू दे से कि वो लेट शादी करेंगे उसका, या फिर वो पहले सक्सेसफुल होंगे, पहले पैसा कमाएंगे, फाइनेंशियली सेटल होंगे, स्टेबल होंगे। द रीजन इज दैट बिकॉज दे हैव सीन देयर पेरेंट्स एंड एल्डर्स ऑलरेडी स्ट्रगलिंग सो मच। तो ये, क्योंकि मैं खुद ये चीज फील करती हूँ, टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम डिनाइंग टू गेट मैरिड, बट आई एम सेइंग दैट इवन आई से मेनी अ टाइम्स टू माय पेरेंट्स दैट जल्दी नहीं है शादी करने की, क्यों करनी है अभी शादी 3-4 साल में या फिर 4-5 साल में, लेट्स वेट फॉर 10 to 12 years more, no, all the 10 to 12 years is too much, so let's wait for 10 to 12 years because I want to get settled, I want to give you everything that you couldn't have. मैंने उनको स्ट्रगल करते हुए देखा है, मैं अभी भी अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते हुए देख रही हूँ, आई सी माय फादर स्ट्रगलिंग राइट नाउ आल्सो।
अभी भी वो काम करना, एंड आई सी दैट बिकॉज एक एज पे पेरेंट्स को भी आई गेस दे आल्सो नीड रेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी। तो जब बच्चा वो चीज दिखता है ना कि पेरेंट्स अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर अंदर एक ऐसा फीलिंग आता है कि नहीं, आई हैव टू डू एवरीथिंग फॉर देम। मुझे पहले इतना केपेबल होना है फाइनेंशियली ताकि मेरे पेरेंट्स को इधर उधर कुछ ना करना पड़े, और उनको जो वो चाहे तो विदाउट एनी सेकंड थॉट उनको मैं सामने ला के दे दूं। ऐसा एक थिंकिंग है जिस वजह से लोग बेसिकली आजकल प्रेफर कर रहे हैं, यंगस्टर्स प्रेफर कर रहे हैं, ये मेरा भी थिंकिंग है, काफी काफी का होगा, जिससे प्रेफर कर रहे हैं कि पहले फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं, वेदर इट टेक्स 10 years 12 years 15 years, एंड देन उसके बाद जाके विल थिंक अबाउट मैरिज। वन ऑफ द रीजंस इज दिस आल्सो। सेकंड, वन ऑफ द रीजन ऑल्सो जो ये डिलेड मैरिजेस या फिर डिवोर्सेस ऑल्सो, केसेस ऑफ डिवोर्सेस आर इंक्रीजिंग, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। सो वन ऑफ द रीजंस इज दिस कि जैसे कि शशांक जी ने भी बोला कि इनटॉलरेंस, यू नो, और कोई रिलेटिव नहीं है जिसके सामने आप जाके वेंट आउट कर सको चीजें। See, relationships are not easy, and I'm very small in front of you all to talk about relationships because मैं कुछ नहीं हूँ आप लोगों के सामने. You people know more than me about this topic. But what I feel as a youngster is that आजकल की young generation में westernization का इतना ज़्यादा influence है that they're getting influenced by those woke people, you know, woke जो हम कहते हैं especially. तो they are getting influenced by those people. तो क्या होता है कि इंडिविजुअलिटी इतनी ज्यादा आ गई, दे डोंट वांट टू गेट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी, चाहे वो फिर इमोशनल डिपेंडेंसी क्यों ना हो, वो चाहते ही नहीं है, दे डोंट वांट टू। वो किसी को वो मौका ही नहीं देना चाहते कि भाई मैं किसी को मौका दूं बोलने का कि इसने मेरे कंधे पे सर रख के रोया था। इसमें ये बहुत ही गलत फीलिंग है एक्चुअली, और ये सेंस ये नहीं आना चाहिए थॉट किसी यंगस्टर के दिमाग में। पहली बात तो ये, दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि क्यों इंटॉलरेंस बढ़ रहा है रिलेशनशिप्स में। थोड़ा सा कुछ अनबन हो जाती है तो दे टेक इट टू इंडिविजुअलिटी कि इसने ऐसे कैसे कर दिया, इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग द इशू दे टेक इट टू इंडिविजुअलिटी कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरा सी आई एम नॉट इंक्लूडिंग दोज मैरिज केसेस हियर जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, दोज केसेस आर टोटली डिफरेंट, लेट्स कीप दैट असाइड ओनली। बट मैक्सिमम केसेस आजकल जो डिवोर्सेस के आ रहे हैं, अगर आप उनकी पूरी छानबीन करेंगे तो आपको पता चलेगा कोई सीरियस रीजन ही नहीं है पीछे डिवोर्स का। इट्स टोटली कुछ भी कर रहे हैं, लाइक इतना इंटॉलरेंस आगे इंडिविजुअल। बहुत से अजीब केसेस तो मैंने भी इनफैक्ट सुने हैं जिनको सुन के मैं भी शॉक हो गई कि देयर वाज नॉट अ सिंगल रीजन। सी आई एम नॉट जजिंग कि हाँ two people they only know that what is going into their relationship, so we are nobody to judge, we are nobody to even say anything, but the thing is that this is truth and this is fact. So one more thing, जैसे जो मैंने बोला था स्पिरिचुअलिटी का कि बच्चे स्पिरिचुअलिटी के साथ ज्यादा या फिर रिलीजियस स्टफ एंड ऑल के साथ ज्यादा नहीं कनेक्टेड है। सो वन ऑफ द रीजन इसके अपने ही कल्चर को लेके इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, बिकॉज आसपास पीयर प्रेशर इतना ज्यादा है बच्चों का कि अगर आप कुछ अपना ट्रेडिशनल चीज करो या कल्चर को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दें तो आसपास पीयर प्रेशर की तरफ से आ जाते हैं कि अरे यार क्या यू डूइंग दिस, नो तुम उधर जा रहे हो, लेट्स गो टू क्लब, लेट्स गो हैंग आउट, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस। तो पीयर प्रेशर के चक्कर में तो 90% चीजें बच्चे गलत कर ही देते हैं। तो वहां पे जो 10% नहीं करते हैं उनमें अकल होती है, उनमें मेच्योरिटी होती है, तो वो खुद को रजिस्ट कर लेते हैं उस चीज से, बट बाकी 90% डूब जाते हैं उसमें। प्रॉब्लम ये है नाउ। एक और चीज है इसमें कि एक और चीज की जो बच्चे जैसे पढ़ लिख के फिर बाहर चले जाते हैं अब्रॉड एंड देन दे डोंट कम बैक। मेरे को क्योंकि मैक्सिमम 95 केसेस तो मैंने देखे हैं, अपने भी काफी देखे हैं, दे वेंट फॉर स्टडीइंग टू यूएस, यूके एंड अदर प्लेसेस, यूरोप एंड ऑल। It's easy to say that you will go there and study for 2 years or 3 years and then come back to do the job. It's not easy at all. Once you start earning there a fancy amount of money, nobody will even wish to come back, because अगर आपको एक अच्छा एक upgraded lifestyle मिल रहा है, you're getting every facility, you're getting so much money, तो कोई क्यों आना चाहेगा, बात ही है। But the thing is that यहाँ पे पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। मेरा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, वन ऑफ माई नेबर्स यूज्ड टू बी देयर, जो अब नहीं रहे, ही एक्सपायर्ड। उनका इकलौता बेटा था एंड ही यू नो दैट वाज अ वेरी गुड फैमिली, बहुत अच्छी फैमिली थी वो। उन्होंने अपने बेटे को बाहर यूएस भेजा पढ़ने के लिए एंड उन्होंने बहुत सपोर्ट किया फादर ने कि यू गो, बट एक चीज बोली थी कि पढ़ के वापस आ जाओ जॉब करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे कोई और नहीं था, माँ बाप अकेले थे, तो दे विश दैट थिंग ओनली। बट द थिंग इज दैट जब बच्चे ने कमाना शुरू किया तो
वो फिर ऑब्वियसली नहीं हो पाया। फिर उसने कमाना शुरू किया, उसकी वहीं पे जॉब अच्छी लगी, उसने गवर्नमेंट जॉब मिल गई वहां पे, उसके बाद उसको पूरा सिटीजनशिप भी हो गया वहां पे, एंड देन उसके बाद फिर उसकी शादी भी हो गई वहां पे, एवरीथिंग हैपेंड एंड पेरेंट्स यहीं के यहीं रह गए। ऐसा नहीं कि शादी में नहीं गया, फिर एवरीथिंग हैपेंड, बट वो बच्चा कभी वापस नहीं आया परमानेंटली। और यहाँ पे मैंने, क्योंकि वो मेरे नेबर्स थे और उन पेरेंट्स को, उन अंकल को मैंने खुद देखा है उस मिजरी में, तो उनका वो स्टेटस देख के, क्योंकि मैं खुद आई गेस थर्ड या फोर्थ क्लास की बच्ची थी, एंड मुझे ये फील, उस थर्ड फोर्थ क्लास की बच्ची को भी वो चीज फील होती थी जो उनका अपना बेटा नहीं फील कर पा रहा था। एंड अभी भी शायद मैं उस बारे में बात कर रही हूँ तो आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल, क्योंकि वो मेरे कुछ लगते नहीं थे, कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, बट मैंने उनको बहुत स्टार्टिंग से देखा है, व्हाट ही फेल्ट। उन्होंने, हम के हमारे सामने बैठ के, हम उनके कुछ नहीं लगते थे, हमारे सामने बैठ के उन्होंने रोया है। रोया इन द सेंस कि कभी कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के बारे में गलत नहीं बोलना चाहेगा, ना ही रोना चाहेगा, ना ही अपने घर की बात बताना चाहेगा किसी और स्ट्रेंजर को, बट जब चीजें एक लेवल तक पहुंच जाती हैं फिर वो कंट्रोल में नहीं रहती। यूज्ड टू नो अपने आप आंसू आ जाते थे, तो मैंने वो चीजें देखी हैं। तो ये चीजें भी बहुत बहुत लाइक, हम यहाँ पे बच्चों को और पेरेंट्स को स्पेशली एक चीज समझनी चाहिए कि इफ यू आर एनकरेजिंग योर चिल्ड्रन टू गो आउट फॉर स्टडीज एंड एवरीथिंग, एटलीस्ट यू शुड, यू नो, स्टार्टिंग से जब वो छोटे थे ना, उनको एक उनका, यू शुड हैव शेप देयर माइंड जब वो डेवलपिंग स्टेज में थे, ऐसे कि उनको अपने कल्चर का, अपने ट्रेडिशन का, अपने वैल्यूज जितने भी हैं, जितना भी कुछ है हमारा, उन सब का एक प्रॉपर इंपॉर्टेंस पता रहे, ताकि ऐसा ना हो कि एक एज में जाके फिर वो उनको, क्योंकि अब देखिए जब जो 22, 23, 24 की एज है ना, यहाँ पे यू कांट एक्सपेक्ट देम टू चेंज। अब नहीं चेंज हो पाएंगे बिकॉज ये बहुत स्टबर्न एज है, बहुत स्टबर्न। अगर इस एज के बच्चे ने डिसाइड कर लिया है ही और शी वांट्स टू डू दिस थिंग, वो बहुत मुश्किल है, लाइक 1 to 2% पीपल वुड बी देयर जो माँ बाप की बात मान लेंगे, बाकी तो कोई सुनेगा भी नहीं। वो बोलेंगे कि नहीं वी आर राइट। आपने बिल्कुल सही कहा शशांक जी, प्रॉब्लम ये है कि सुनना ही नहीं चाहते हैं, दे डोंट वांट टू लिसन। कॉन्वर्सेशन तो दूर की बात है, पहले ही बोल देते हैं दिमाग में, सो बिकॉज स्टबर्ननेस बहुत ज्यादा है, सुनना ही नहीं चाहते। उन्होंने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आवर डिसीजन इज राइट। तो सामने वाले को सुनना ही नहीं चाहते वो। तो द थिंग इज दैट, तो यहाँ पे पेरेंट्स को एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि सी, चाहे ये डिलेड मैरिजेस हो या फिर कुछ भी हो, या फिर चूजिंग द राइट पार्टनर, इवन ये भी बहुत बड़ी चीज है, चूजिंग द राइट पार्टनर फॉर योर लाइफ। उसके लिए भी पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। घर पे देखिए, ओपन, मुझे लगता है मैक्सिमम कश्मीरी फैमिलीज में आजकल अभी ऐसा है, मैं ये एज अ यंगस्टर आपको बोलती हूँ कि इतने ओपन नहीं है पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ, एक जनरेशन गैप अभी भी है, एंड ये इंडियन फैमिलीज में है, देयर इज अ जनरेशन गैप, बिग जनरेशन गैप। एंड मे बी पेरेंट भी बोलना चाहता है, कन्फेस करना चाहता है, बच्चा भी कन्फेस करना चाह रहा है, बट वो जनरेशन गैप की वजह से वो कन्फेस ही नहीं हो पा रहा कभी भी, और वो बिल्कुल साइलेंस रह जाता है बीच में। तो ना इधर की बात उधर जा पाती है, ना उधर की इधर आ पाती है, तो दोनों एक दूसरे को गलत ही समझ बैठते हैं। पेरेंट को लगता है कि बच्चा मुझे नहीं समझ रहा, बच्चे को लगता है पेरेंट मुझे नहीं समझ रहा, तो दोनों एक दूसरे को गलत समझना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे वो जनरेशन गैप ना, आई गेस, कवर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन सबका सारा हल तो मुझे लगता है सुई पूरी जनरेशन गैप पे आके टिक जाती है। अगर ये जनरेशन गैप हट जाता है ना, पेरेंट्स स्टार्टिंग से ही बचपन में एक एनवायरनमेंट ऐसा बनाना शुरू करते हैं जहाँ पे आप बच्चे को एक प्रॉपर स्पेस भी दे रहे हैं, मगर साथ ही साथ आप उसको ये भी बता रहे हैं कि इवन इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग, ट्राइंग एवरीथिंग, बट यू शुड नो द फैक्ट कि एट द एंड ऑफ द डे यू शुड नॉट डू समथिंग एटलीस्ट ऐसा जिसमें आके आपको खुद रिग्रेट हो कि आपने ये क्या कर दिया, या फिर आप अपने पेरेंट्स को या फिर दुनिया को कैसे फेस करोगे। तो पेरेंट्स को मुझे लगता है ये चीज बहुत बतानी चाहिए। आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ। मैं आई एम द एल्डर वन एट होम, तो मैंने ये जनरेशन गैप बहुत अच्छे से देखा है, इनफैक्ट अभी भी देख रही हूँ। तो क्योंकि बड़े बच्चे के साथ वैसी बहुत स्ट्रिक्टनेस रहती है घर में। अब मेरी जो यंगर सिस्टर है, शी 7 years यंगर देन मी। व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया है कि मैंने उसके साथ ऐसा रिलेशनशिप रखा है, राइट नाउ वी आर हैविंग सच अ रिलेशनशिप दैट टच वुड नथिंग शुड हैपन, बट इफ एनीथिंग इन फ्यूचर, इफ एनीथिंग रॉन्ग हैपेंस टू हर, एनीथिंग रॉन्ग related to anything, I don't care, I'll be the first person she'll come to and confess, and एकदम साफ साफ बोल दी कि दी ऐसा हुआ है, I did this wrong, I did this wrong, तो अब मैं क्या करूं। तो she'll confide into me। बात ये है, तो मैंने, अब ऐसा क्यों, हम भी 7 साल का एज गैप तो हमारे में भी है, काफी अनुभव हमारे में भी बीच हो जाती है। She comes into that Gen Z category and मैं उससे ऊपर वाली कैटेगरी में, तो काफी चीजों में मैं भी उसको सपोर्ट नहीं करती। बट द थिंग इज दैट मैंने एक ऐसा एनवायरनमेंट उसके इर्द गिर्द रख दिया खुद को लेके कि I tell her to do everything. I say, you want to do this, you want to do this, you go try. But
अपने लिमिट्स में सब कुछ ट्राई करना, अपने लिमिट्स में सब कुछ करना, एंड एट द एंड यू शुड नॉट रिग्रेट योर डिसीजन, ऐसा कभी कुछ नहीं होना चाहिए कि जिसको आके तुम फिर रिग्रेट करो बैठ के एंड रो कि व्हाई यू डिड दिस, यू शुड नॉट हैव टेकन दैट स्टेप। तो अगर एक ये एनवायरमेंट अगर घर पे बन जाता है ना पेरेंट्स और चिल्ड्रन के, मुझे लगता है आधे से ज्यादा काम वही आसान हो जाएगा, क्योंकि एक कंफर्टेबिलिटी आ जाएगी घर में चीजों को लेके। और इसमें फिर आ जाता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे से ये भी बता पाएंगे, बिकॉज पेरेंट्स डोंट वांट टू टॉक अबाउट, इवन बहुत मुश्किल से कुछ पेरेंट्स होंगे जो यंग एज में अपने बच्चे से ये बात कर रहे होंगे कॉन्वर्सेशन की व्हाट काइंड ऑफ अ पार्टनर यू शुड चूज, या फिर आगे आपको गिविंग एडवाइसेस रिलेटेड टू योर मैरिज और समथिंग। पेरेंट्स बात ही नहीं करते हैं इस बारे में until unless you reach around 24 और 25 और सीधा आपकी शादी देखने की बात हो जाती है। तो द थिंग इज दैट, सी बच्चा ही तो है ना, बच्चे को आप अब कश्मीर में इट वाज अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, आपके इतने रिलेटिव्स थे, आप स्पिरिचुअली इतने एक्टिव थे, हर बार पाठ पूजा होती थी, चीजें होती थी, इवेंट्स होते थे, ये होता था वो होता था, तो लोग बहुत कनेक्टेड थे सब चीजों से, अपने रूट्स से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे। यहाँ हम अपने रूट्स के साथ हैं ही नहीं, हम तो अगर मतलब मटीरियलिस्टिकली भी देखें तो अपने रूट पे ही नहीं खड़े हैं, हम तो कहीं और ही है अपने होमलैंड से, वी आर नॉट इवन स्टैंडिंग ऑन आवर प्लेस राइट नाउ। तो हम तो कश्मीर से भी काफी दूर है, तो स्पिरिचुअली एंड उससे तो हम लोग तो काफी दूर हो गए हैं। हमारी जो बड़ी जनरेशन है, मेरे फादर मदर जो भी है, उनके तो फिर भी बिकॉज दे नो, दे हैव सीन ऑल दैट, तो वो अभी भी कनेक्टेड है। एंड इवन आई एम, बिकॉज घर पे वो माहौल मिला, बट बाकी बच्चे नहीं हो पाएंगे बिकॉज मेन थिंग है घर पे वो माहौल नहीं मिला है। अब आई से वन मोर थिंग, जैसे मैं हम लोग एक प्रोग्राम ऑल्सो करते हैं दैट सुपर कास्ट तारुक लिखा है मेरे नाम के नीचे, तो दैट इज बेसिकली अ टाइटल, जो एक एनुअल प्रोग्राम होता है जम्मू कश्मीर विचार मंच डज दैट। अदर थिंग इज दैट अभी हमने कश्मीरी स्पीकिंग वर्कशॉप कंडक्ट की थी, एंड देयर वर वेरी वेरी फ्यू किड्स, दैट वाज अ वंडरफुल वर्कशॉप, ट्रस्ट मी, वंडरफुल, एंड we'll be doing more, but there were very very few kids, 9 to 10 kids only, and registration इतने बच्चों का हुआ था बट आए कुछ नहीं। रीजन इज दैट, अब यहाँ पे बच्चों की गलती नहीं है, बच्चे तो चार चार फोर्थ या फिफ्थ क्लास के बच्चे हैं, वो थोड़ी खुद चल के आएंगे, उनको कौन लेके आएगा, उनको पेरेंट्स लेके आएंगे ना। ऐसा है ना, ये है ये कि आजकल पेरेंट्स ही नहीं चाहते हैं, दे डोंट वांट टू टेक द पेन्स, इतने नेग्लेक्टिंग हो गए हैं, दे डोंट वांट टू अटेंड द इवेंट्स, दे डोंट वांट टू लेट देयर चिल्ड्रन हैव दिस एनवायरनमेंट एंड सी कि हमारा कल्चर क्या है, हमारी चीजें क्या, एक्सप्लोर ही नहीं कराना चाह रहे हैं बच्चे को। कुछ भी होता है अगर घर पे जैसे पाठ पूजा कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है और बच्चा चिल्ला रहा है, तो बच्चे को चुप कराने के लिए फोन दे दिया या टीवी ऑन कर दिया, दैट इज नॉट द थिंग, एंड देन यू विल ब्लेम कि बच्चा ऐसा बड़ा हो गया, ऐसा तो नहीं है। See, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी गलती भी हुई है। अगर आप बच्चा वहाँ पे रो रहा है तो आप उसको हैंडल करने के लिए दूसरी चीज करिए ना, आप उसको दूसरी एक्टिविटी, फोन इज नॉट द ओनली एक्टिविटी यू कैन गिव इनटू द हैंड्स ऑफ अ चाइल्ड। बहुत सी एक्टिविटीज हैं, आप उसको कुछ और करने को बोलिए, आप उसको कोई और को करिकुलर एक्टिविटी में इंटरेस्ट बढ़वाइए ताकि वो और चीजों में इन्वेस्ट करे अपना टाइम। बाय ओनली द टेक्नोलॉजी, द थिंग इज दैट यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों जगह से चीजें लैक हो रही हैं, जिस वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं। So, तभी तो बोल one more thing, I'll just conclude, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। One more thing is that कि हमारे जैसे जो we should start, elders should start shaping the young minds from a very early age। जो बच्चे जैसे 3-4 साल के हो गए, क्योंकि 3-4 साल में सेंस आना शुरू हो जाता है, चीजें समझने आनी शुरू होती है। आई गेस तब उस एज से ही अगर वैसा एक पूरा एनवायरनमेंट घर से, बिकॉज चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम एंड टीचिंग एंड ट्रेनिंग स्टार्ट फ्रॉम होम, मुझे लगता है उस बात से समझ में शुरुआत करनी चाहिए। घर पे अगर वैसा एनवायरनमेंट बनेगा, घर पे एनवायरनमेंट बच्चा तभी बच्चे को याद भी रहेगा कि यार बचपन से ये चीज होती आ रही है, बचपन से अर्थम पे हम नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, अर्थम पे माँ फाक रखती है, या फिर ये होता है या वो होता है। तो ये चीज आजकल कौन बच्चा अर्थम डर रहा है, मुझे डरना तो दूर की बात है, किसको याद है अर्थम कब होती है, किसको बच्चे अर्थम पे कुछ नहीं पता होता है। They don't care about anything. थिंग इज दैट अगर आपको बचपन में थोड़ा सा कंट्रोल रहा हो घर पे, थोड़ा सा कंट्रोल के साथ साथ एक बचपन में एनवायरनमेंट दिया होता, बताया होता कि सी दिस इज आवर कल्चर, ये हमारे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, इन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स में हम ऐसा करते हैं, हमारा कल्चर ये है, इसका मतलब ये है, इसकी सिग्निफिकेंस ये है, एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट कि हम इस कल्चर में पैदा हुए। तो अगर ये चीज आप बार बार बताएंगे तो कोई अगर जिसमें दिमाग भी नहीं होगा ना इंसान में, उसको भी समझ आ जाएगी। हम तो फिर भी काफी दिमागदार, मतलब वी शुड से कि कश्मीरी पंडित्स तो दे आर ब्लेस्ड विद लवली माइंड्स, तो हमें तो ज्यादा एफर्ट्स लगाने की वैसे भी जरूरत नहीं है।
तो ऐसा नहीं है कि बच्चे समझेंगे नहीं, बट समझाना पड़ेगा, और ये एक दिन में काम नहीं होगा, ये काफी साल लगेंगे. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. एंड स्ट्रेंथन द एथिक्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जो हमारे एथिक्स हैं, जैसे आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट फ्रेंड फ्रॉम तमिलनाडु, यू नो, दैट पर्सन इज सो स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स हिज एथिक्स. उसके अपने एथिक्स हैं. ही विल नॉट ड्रिंक, ही विल नॉट स्मोक, ही विल नॉट से एनी अब्यूजिव वर्ड. आजकल अब्यूजिव वर्ड इज वेरी कॉमन. आप आजकल की यंग जनरेशन को देखिए ना, इट्स वेरी कॉमन, बहुत ट्रेंड में चल रहा है. कोई नॉर्मली बात ही नहीं करता है, क्योंकि नॉर्मली बात करते तो सीधे खिलाए जाएंगे. पीयर प्रेशर, यू नो, अगेन पीयर प्रेशर. So the thing is that उसके ethics इतने strong है. He says, I don't care, I'm between these people, but I'll still stand on my ethics only. तो मुझे लगता है ये सेंस बच्चे को फील कराना बहुत जरूरी है, बहुत यंग एज से, कि देखो जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ना, या सिखा रही हूँ, ये तुम्हारे जो एथिक्स में तुम्हारे अंदर इनकलकेट कर रही हूँ, कर रहा हूँ, तुम्हें इन पे प्राउड फील करना चाहिए. किसी भी मोमेंट पे सी, आप बहुत लोगों के बीच में, आप बहुत अलग अलग टाइप के लोगों से मिलेंगे, बट नॉट इवन एट अ सिंगल मोमेंट यू शुड फील कि आपका, आपके जो एथिक्स है ना, आपको उन पर डाउट नहीं होना चाहिए कभी, कि क्या मैं ये सही सोच रहा हूँ, क्या मैं बचपन से ये सही करता आ रहा हूँ. क्योंकि आपके एथिक्स सही है, आपको सही सिखाया जा रहा है बचपन से, उसका कुछ ना कुछ रीजन है. हर रिलीजियस बिलीफ के पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन है. ये क्यों बोला जाता है कि शादी की एक पर्टिकुलर एज होनी चाहिए. बोला जाता है कि 25-26 में शादी कर लेनी चाहिए लड़की को, या फिर 27-28 में लड़के को. साइंटिफिक रीजन. अच्छा, यंगस्टर्स डोंट वांट टू टॉक अबाउट रिलीजियस स्टफ पे, तो बात ही नहीं करनी ना. लेट्स टॉक अबाउट साइंस ओनली. हम साइंस को बहुत ज्यादा मानते हैं ना, हम प्रूफ पे बहुत ज्यादा बात करते हैं, हमें हर चीज का प्रूफ चाहिए, तो साइंटिफिकली बात करें. लेट्स टॉक इन द साइंटिफिक लैंग्वेज ओनली. व्हाट डज द गायनेकोलॉजिस्ट से, व्हाट डू द डॉक्टर्स से? दे आल्सो से कि 35 के बाद फीमेल्स कांट हैव अ बेबी एट ऑल. यहाँ पे शादी 35 के बाद हो रही है. कितनी क्यों कॉम्प्लिकेशंस हो रही है बच्चों में, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्यों उनमें डिफॉर्मिटीज हो रही है? द रीजन इज साइंटिफिक. देयर इज नॉट एनी रानी चारण रेडीमेड फॉरवर्ड का पत्ता गरम की बात. साइंटिफिक रीजन है ना. यू डोंट वांट टू सी थिंग्स रिलीजियसली, सी थिंग्स साइंटिफिकली एंड डू दैट. बट दे डोंट वांट टू डू दैट आल्सो. थिंग इज दैट नेग्लेक्टिंग बिहेवियर. तो वो नेग्लेक्टिंग बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, और उसमें घर पे कैसा एनवायरनमेंट, बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें. एंड आई थिंक ये जो आज का सेमिनार है, ऐसे सेमिनार्स होते रहने चाहिए. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. मुझे लगता है यहाँ पे आज जितनी ऑडियंस है, वी शुड इन फ्यूचर एम की इसकी 3 to 4 times ऑडियंस हो, और इसमें सिर्फ यंगस्टर्स हो, सिर्फ और सिर्फ यंगस्टर्स हो, बिकॉज यंगस्टर्स नीड टू लिसन टू ऑल दैट. एंड वन मोर सजेशन इज दैट कि ये मेरे दिमाग में काफी टाइम से था, बट मेरे को कभी मौका नहीं मिला. आज इधर मौका मिला है, तो इससे आयल से कि जैसे आज आप दो एल्डर्स हैं एंड वी आर द यंग वंस. इट्स काइंड ऑफ अ डिबेट, यू नो, कॉन्वर्सेशन, टू वे कॉन्वर्सेशन. सो वी शुड कीप दीज टू वे कॉन्वर्सेशंस. ऐसे कुछ प्रोग्राम्स रखने चाहिए, नॉट जस्ट स्पीचेस, कि बच्चे ने आके बोला, स्पीकर हमने डिसाइड किया, उसने 7 मिनट की स्पीच दी, फिर बड़ा आके स्पीच देगा, फिर हम एंड में कंक्लूड करेंगे. नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है. लेट्स कीप इट अ डिबेट ओनली. एक प्रॉपर डिबेट रखते हैं, एल्डर्स वर्सेस यंगस्टर्स, एंड कीप अ टॉपिक. कोई भी रिलीजियस टॉपिक उठाइए, कोई भी टॉपिक उठाइए, लेट इट बी यंगस्टर्स वर्सेस एल्डर्स. अब यहाँ पे उनको कन्वर्सेशन करने दीजिए. लेट अ डिबेट हैपन. नो, उनको डिबेट करने दीजिए. वहां पे ट्रस्ट मी, यंगस्टर्स, आप मेरे से लिख के ले लीजिए कि बहुत इंटेलिजेंट है कश्मीरी पंडित यंगस्टर्स, बहुत ही ज्यादा समझदार भी है, मेच्योर भी है चीजों को लेके. ऐसा नहीं कि वो चीजें समझेंगे नहीं. ट्रस्ट मी, आफ्टर दैट जितने भी यंगस्टर्स होंगे ना, उनमें से मुझे लगता है अगर 10 होंगे तो 10 में से 8 या 9 तो समझ ही जाएंगे बहुत सारी चीजें. बहुत सी चीजें उनके दिमाग में चेंज हो जाएंगे. एंड ट्रस्ट मी, उस सेमिनार या डिबेट में not only the youngsters will learn from elders, even elders will learn few things from youngsters. क्योंकि काफी ऐसी चीजें भी हैं जो बच्चों के दिमाग में चलती है, they are not about to say that, वो नहीं बोल पाते हैं, एंड वो चीजें सही होती हैं, बट वो जनरेशन गैप की वजह से वो कम्युनिकेट ही नहीं हो पाता है. तो आई गेस ऐसे मुझे लगता है ये these kind of debates, you know, conversations should happen, should be conducted. So I'll just conclude with it. Thank you so much for having me, and thank you so much for listening so patiently. Thank you, Vanshika, for showing so much of passion. So that is what is required in the youngsters. Vanshika ने कुछ एक points पे like she shed some light. She said कि parents को हमने struggle करते हुए देखा है. So probably that is one of the reasons कि हम शायद पहले settlements चाहते हैं कि जो problems उन्होंने face करा. So we should not face those problems. Plus, we should help our parents to come out of those problems now. At least they can
एज इन वो अपना जो बुढ़ापा है या अपना जो एल्डरली एज है उसको अच्छे से बिता पाए. दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स. शी आल्सो टॉक्ड अबाउट वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो रहा है हम पे. So, which is true also, but at the same time, she gave an example of one of her friends from Tamil Nadu, and she was like, I was surprised, and I asked him that how come he, as in, manages to learn all those things, and then instead he was surprised and he asked me, how come you don't know? So, अगर हम वेस्टर्नाइजेशन से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, at the same time हम एक ऐसे बंदे से भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं जो अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है. And Vanshika, I suppose I'm not wrong when I say कि वेस्टर्नाइजेशन का इन्फ्लुएंस तो इतना जनरलाइज हो गया है, पर ऐसा इन्फ्लुएंस जब आता है, it probably gets embedded somewhere in your head, and you also start feeling कि हाँ यार कुछ तो बंदे में दम है, and then that inferiority complex goes. तो वो चीज से हमें इन्फ्लुएंस होना बहुत जरूरी है. एंड देन यू टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो. तो अगर हम शास्त्रों की भी बात करते हैं, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, सुशील जी यहाँ बैठे हैं, शशांक जी यहाँ बैठे हैं, एंड बहुत सारे वेटरन्स हमारे यहाँ पे हैं, बट स्टिल आई वुड से कि जो हमारे शास्त्र है वो भी तो साइंटिफिक ही है, एंड दैट इज व्हाट द पॉइंट वाज ब्रॉट बाय वंशिका ऑल्सो. तो वो चीजों का शायद हमें इग्नोरेंस है, हमें पता नहीं है. So as it is said, little knowledge is a dangerous thing. तो हमें छोटी मोटी चीजें पता है, शायद बहुत सारी चीजें पता नहीं है. So we need to delve a little deeper into it and know our culture well. So that would be one of the solutions. And then she said peer pressure होता है, and बहुत अच्छा example उन्होंने दिया कि अपनी sister के साथ बैठ के ये उनको बताती हैं कि boundaries set करनी है, you do whatever you want to do. I suppose every parent should do that. और एक चीज जो मैं personally believe करती हूँ, हमें अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि आप हर कोई चीज चेरिश करिए, ऑब्वियसली विद इन द बाउंड्रीज. और जब भी आप कोई चीज करते हैं, सिर्फ एक बार ये सोचिए कि 5 years डाउन द लाइन, 6 years डाउन द लाइन, इस चीज का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा मेरे पे. अगर हम ये सोचना शुरू कर दें कि 6 years 7 years डाउन द लाइन, क्या ये चीज जो मैं कर रहा हूँ, इज इट गोइंग टू डू एनीथिंग गुड फॉर मी 6 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन, देन लेट मी गो अहेड विद इट. इफ नॉट, देन प्रॉब्ली लेट मी रेस्ट्रेन. So that is the thing. And then she also talked about कि youngsters इतने ज्यादा independent हो गए हैं कि उनको लगता ही नहीं है कि हमें मतलब dependence की जरूरत है. But in the process we forget that we are not independent human beings, we are interdependent. अगर हम सब कुछ खुद से ही कर रहे हैं, खुद से ही सब कुछ हो रहा है, तो जब problems आते हैं तो फिर हम वो भी खुद से ही solve क्यों नहीं करते हैं? Right, so debate should go on, and what you suggested, that was a very good point, and I would tell you that's in the pipeline, and even I would be very blessed to be a part of that. So thank you Vanshika, thanks again. फटाफट से मैं वंशिका के बारे में आपको बता दूं. मैं बाद में क्यों बता रही हूँ, because when you listen to their speeches, then you pay an ear कि हाँ अब मैं सुनूं कि ये बच्चा कहाँ से आया है. So Vanshika pursued bachelor's in zoology from Miranda House, University of Delhi, and presently enrolled in master's in life sciences at Central University of Gujarat. Currently carrying on end semester research in cancer biology at Jawaharlal Nehru University, Delhi. She has learned Hindustani classical music also, so she gave us examples from that also. She's a biology student. She gave us an example of sapling also, well connected. Has been awarded by Jammu Kashmir Vichar Manch as Super Gashtar for being a budding coach for teaching young Kashmiri kids music free of cost. She has performed on various platforms, including overseas live sessions, or whether it's performing in front of Honorable Prime Minister Modi ji, Anupam Kher ji, Hariharan ji, and many more in Azadi Ka Amrit Mahotsav, Sabarmati Ashram, Ahmedabad. For the last 2 years, she's got the opportunity to sing for Jammu Kashmir Tableau for 26th January parade event. Thank you so much, Vanshika. Now we have the next young dude over here. This language थोड़ा सा use करें इसलिए. So we have Kevin Cole with us. Kevin Cole, please. First of all, thank you so much for inviting me. I'll just get to the speech real quick. So what I can say about the given topic was not a discussion at all, because Ajay uncle approached me and ordered me, भाई तू youth है, मेरे को पता है ना, तुझे बोलना है, हाँ, youth है. So first of all, topic is Exile induces demographic changes should be replaced by exodus induced demographic changes in our KP community
ठीक है? Hope you all agree with me. And kindly note that community under tremendous stress. ठीक है? मैं मेन मुद्दे पे आ रहा हूँ, बिल्कुल straight to the point. So under tremendous stress, would want to think about one's own survival, first leading behind our language, culture, and tradition. Now, since Ajay uncle and others in community are very worried about change in demographic status of our community, therefore we need to think how can we improve it. So I would like to share some thoughts. So first of all, मैं ना मेन मुद्दे पे आता हूँ because I don't want to, to my mind, all marriages must have between our community members only, right? If you want to grow the community, if you really want to see the community, अगर आपको देखना है कि community आगे जा रही है, बढ़ना चाहती है, तो शादियां कश्मीरी community में होनी चाहिए. लेकिन I don't want to hurt anyone's sentiments क्योंकि मेरे कहने से कि भाई कश्मीरी लड़की है, कश्मीरी लड़का है, शादी कर लो, totally depends on individual. Always remember, if you want to grow the community, you need to see both sides. So मेरे thoughts थोड़े से अलग हैं, and I wouldn't say कि Western culture is getting up on us. Wouldn't say that क्योंकि I was born in Russia and my mom and dad are pure Hindu Kashmiris, Kashmiri Pandits, right? So अकेले रहना भी एक कला है. आजकल के जमाने में आपको ऐसा फ्रेंड नहीं मिलने वाला या ऐसी लड़की नहीं मिलने वाली, आई एम सॉरी टू से बट दिस इज द ट्रूथ, जो सच्चा हो, जो सच्ची हो. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो सुट्टा पीते हैं, आजकल का सुट्टा, सिगरेट, दारू, व्हाटएवर, द लिस्ट गोज ऑन. ठीक है, काफी लंबी लिस्ट है. लेकिन मैंने उधर से सिर्फ देखा और नॉलेज सीखी कि अरे यार इनको होता क्या है, ये होता क्या है. मेरे मन में बहुत सारे सवाल है, क्या मैं ट्राई करूं, ना करूं, क्या होगा कि अगर मैं ट्राई करूंगा, क्या होगा कि अगर मैं ट्राई नहीं करूंगा, क्या हो जाएगा, है ना. बट मैंने नहीं करा क्योंकि जैसे मैंने इन लोगों को देखा, ये लोग तड़प रहे हैं, इनको सांस नहीं मिल रही है, इनको सिगरेट चाहिए, वो भी चाय के साथ. इमेजिन, आप समझ रहे हो ना. तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वेस्टर्न कल्चर ने हमें ये करा या वो करा, ये करा, बट आई कैन ओनली से कि ये डिपेंड करता है अपनी सोशल अवेयरनेस से. मैं तो रशिया में पैदा हुआ था. फॉर दोज हु यू डोंट नो, आई वाज बोर्न इन रशिया एंड लिव्ड देयर फॉर द पास्ट 10 years विद माय पेरेंट्स. एंड मुझे टूटी फूटी कश्मीरी लैंग्वेज आती, टूटी फूटी, मतलब बतख्यो, खाना खाया, ये सब वो सब छोटी छोटी सी चीजें आती है, समझनी पूरी आती है. सो अगेन डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल. टेक एन एग्जांपल ऑफ मी, लाइक बहुत लोग कहते हैं कि यूथ यूथ, ओके लेट मी जस्ट टेल यू कि मैं परफेक्ट एग्जांपल हूँ यूथ का. मेरे बाल लंबे हैं, आप समझ रहे होंगे, कोई स्टाइल, कोई बोल रहे थे कि राइट. तो see, this topic is a very debatable topic, like like Manshika said, but इसमें बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं कह सकता हूँ. लेकिन मैं अभी मेन मुद्दे पे आता हूँ. I don't want to distract myself. I will strongly recommend to all KB community members to return our traditional joint culture family. अगर आपको एक कम्युनिटी ग्रो करनी है तो आपको जॉइंट फैमिली में रहना भी इम्पोर्टेंट होता है. मगर अपने हाथ पे दिल पे हाथ रख के सच बोलना कि मैं जब से छोटा हूं, जब मैं तो बहुत छोटा था, तब से मैंने देखा है, कहना नहीं चाहिए बट कश्मीरी फैमिलीज में ना प्लॉट्स की बहुत डिबेट्स है. अरे तो तूने मेरा प्लॉट लिया, ये करा वो करा, और फैमिलीज में ही है, ये फैमिलीज में ही है. कोई एग्री नहीं करेगा. नोबडी विल एग्री ऑन माय पॉइंट. अरे यार ये मेरा प्लॉट है, ये मेरा जमीन नहीं है, क्योंकि हम खुद
सच बोलते ही नहीं है तो हम केपी कम्युनिटी को ग्रो कैसे करेंगे अगर हम सच नहीं बोलेंगे? नंबर 1, ठीक है। नंबर 3 इज ऑल आर केपी यंग, मैं थोड़ा मिक्स कर रहा हूं तो समझ लेना। All our KP young couples should go for more than 2.1 total fetid rate national worldwide in order to repopulate. यानी कि 3 बच्चे जरूरी है करना या 2 बच्चे जरूरी है करना अगर कश्मीरी लड़की या लड़के से शादी हो रही है तो। सिंपल। क्योंकि हमारे में एक ही बच्चा होता है, मैं एक ही बच्चा हूँ, आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई मम, ठीक है। मैंने मम्मा को बहुत बचपन में कहा था, मम्मा मम्मा मेरे को भी एक छोटा भाई चाहिए, छोटी बहन चाहिए, बट जो हम बोलते हैं केपी कम्युनिटी को बढ़ाना चाहिए, लेकिन हम तो आपस में सच नहीं बोलते ना। अब बच्चा तो हो सकता था, भाई तो हो सकता था, बहन तो हो सकती थी, बट क्यों नहीं हुआ? नॉट बिकॉज ऑफ साइंटिफिक रीजंस, बिकॉज फैमिली में ही इतने इश्यूज हैं। मैंने, आई वोंट टेक एनी नेम्स, बट मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है, एक कश्मीरी होके दूसरी कोई कश्मीरी की कोई मदद नहीं करता। कोई कहेगा नहीं है, कोई कहेगा नहीं, बट ऐसा है। तो ये भी कहना चाहूंगा कि सच बोलिए, सच बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम मैंने, मतलब ये ना, ये वर्ड प्लॉट, पूछो हमारा मकान, मकान देख क्या बना है, क्या है, jealousy, it's a major factor. You guys do not want to admit it, but I am here telling you the harsh truth that it is. मैंने बचपन में देखा है जब मैं रशिया में था। Imagine. Now, I feel that I think good amount of role government भी यहाँ पे निभा सकती है अगर हमारे को अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे तो। पहली चीज, टोटल फ्री एजुकेशन फॉर केपी कम्युनिटी चिल्ड्रन होनी चाहिए मेरे दिमाग में। टोटल फ्री हेल्थ केयर सपोर्ट एंड इंश्योरेंस होना चाहिए। एटलीस्ट 50% रिबेट्स इंडिविजुअल टैक्सेशन होना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टार्ट रिवाइविंग द कश्मीरी कल्चर। अब कश्मीरी कल्चर रिवाइव कैसे होगा? मेरे ख्याल से ऑनेस्टी। जब तक हम खुद से सच्चाई नहीं बोलेंगे तब तक कश्मीरी कल्चर तो छोड़ो, कोई कल्चर रह ही नहीं सकता विदाउट ऑनेस्टी। मेरे को टूटी फूटी कश्मीरी आती है, टूटी फूटी कश्मीरी, एंड मैं प्राउड हूं कि मैंने कम से कम टूटी फूटी कश्मीरी सीखी। क्योंकि जब मैं छोटा था मुझे एक डिजीज हो गई थी, इट्स कॉल्ड मेनिंजाइटिस, इट इज अ ब्रेन डिजीज। सो नोबडी, कोई कह नहीं सकता, कोई एज्यूम नहीं कर सकता कि अरे यार इसको इतनी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, इशू कौशल, इसको कश्मीरी आनी चाहिए, क्यों नहीं आ रही है इसको? सो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, ऑलवेज रिमेंबर, डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। ऑलराइट, एंड कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं क्योंकि आई वाज लिसनिंग। मेरे थॉट्स काफी डिफरेंट है क्योंकि मैं तो यूथ हूं, तो मेरे काफी डिफरेंट थॉट्स हैं। एंड बाहर रहने से मुझे क्या हुआ, मेरे को सीख मिली कि बाहर रहना एक कला है, कला है, इट इज एन आर्ट। काफी लोग अकेले नहीं रह सकते, एंड मुझे भी तो लाइफ में कुछ करना है। जब तक मैं कुछ अपनी लाइफ में नहीं करूंगा तो आगे कैसे बढ़ूंगा? एंड I must sadly disagrरी कि वेस्टर्न कल्चर क्या है? इट्स अ माइंडसेट। I mean,
उन्होंने हमारे को कुछ करा नहीं। आई मीन सी, मेरे एक डैड के फ्रेंड है एंड ही प्लेज अ वेरी गुड क्रिकेट बॉलर है, हिज नेम इज आरिफ। बहुत तेज बॉलर है, कश्मीर का जबरदस्त बॉलर था उस टाइम पे। जब मैं उनके घर गया कश्मीर में, मैंने बोला पापा ये बेड है, क्योंकि वहां पे बेड नहीं थे, वहां पे ना मैट्रेस थे नीचे। और कश्मीरी एकदम ना कश्मीरी स्टाइल में वो यू नो लेटना बैठना, वो गद्दे गोल वाले। तो मैंने बोला, छोटा था, मैंने बोला पापा बेड कहाँ है, मैं सोऊंगा कहाँ भाई, सोऊंगा कहाँ। पापा ने बोला बेटा ये एक्चुअल ट्रेडिशन, यही होता है, हम लोग ऐसे ही बैठते थे, 5 5 6 6 जने ग्रुप्स में बैठते थे हम लोग, एंड हम लोग बातें करते थे बहुत ज्यादा। तो अगेन इट डिपेंड्स, आई एम नॉट गोना से इट डिपेंड्स पेरेंट टू पेरेंट, बिकॉज सिचुएशन पे डिपेंड करता है। क्या पता कश्मीरी पेरेंट्स यूएस में हो, क्या पता कश्मीरी पेरेंट्स रशिया में हो, एंड रशिया तो अलग ही जगह है भाई। किसने सोचा था मेरे मॉम मेरे डैड रशिया में थे, राइट? इवन फॉर द कॉलेज माय डैड वेंट टू रशिया। सो अगेन माय थॉट्स आर रियली डिफरेंट। एंड मेरे को सुबह वाले भजन मेरे को पता है कि कैसे चलते कैसे नहीं चलते, वो कश्मीरी स्टाइल मेरे को सब मालूम है। सुबह सुबह उठते ही बाबा शंख बजाएंगे और फिर गाना बजेगा कश्मीरी वाला, एंड द रूटीन गोज ऑन एंड ऑन। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, ये नहीं, बट मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, ये केपी कम्युनिटी तभी बढ़ेगी जब हम ऑनेस्ट होंगे अपने आप से। ये केपी कम्युनिटी तभी बढ़ेगी जब मैं एज अ यूथ वंशिका को मैं बोल सकता हूं कि वंशिका लेट्स हैंग आउट, बाहर चलो। या मैं इनको कह सकता हूं कि चलो लेट्स लेट्स गो आउटसाइड। इट डजंट हैव टू बी क्लब, इट डजंट हैव टू बी समवेयर एल्स। Are you understanding my point? अगर मैं ऋषभ को बोलूं कि अरे यार कहीं बाहर चल, बट द सैड रियलिटी इज कि मेरे में अभी वो इनर खुद सेल्फ वो नहीं आई है कि यार मैं बोलूं ऋषभ को या मैं बोलूं वंशिका को, क्योंकि हम अपने लाइफ में बिजी है। कोई एडमिट नहीं करेगा। आई एम जस्ट स्पिटिंग द फैक्ट्स, क्योंकि मैं फैक्ट्स पे यकीन करता हूँ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली। एंड मेरी लाइफ में पर्सनली कुछ ऐसी ऐसी चीजें हुई है जिसपे लाइक मैं बहुत ज्यादा लोगों को ऑफेंड करने वाला हूँ, बट मैं गॉड को यकीन नहीं करता। मैं सिर्फ हार्ड वर्क पे यकीन करता हूँ, डेडिकेशन पे यकीन करता हूँ, डिसिप्लिन में यकीन करता हूँ। मेरे इतने सारे दोस्त थे जो स्मोक करते हैं, वीड करते हैं, कोकेन करते हैं। आई वॉज इन अ वेरी मॉडर्न स्कूल called Sri Ram Mulsari. It's one of the most popular schools in Gurgaon. And सारे बच्चे यही करते हैं क्योंकि उनको कूल दिखना है। पर मैंने उधर से सिर्फ इतना ही सीखा कि ये लोग मर रहे हैं, ये एक जहर है, एंड ये लोग लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए कर, कुछ लोग वेप्स कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स। एंड इससे मुझे याद आता है, मेरे एक दोस्त ने कहा था अरे यार मेरे पापा ने ना मेरे को पकड़ ही नहीं पाए मेरे पापा। मैंने बोला क्यों? अरे नहीं वो इलेक्ट्रॉनिक वेप है ना। तो मैंने बोला ये इलेक्ट्रॉनिक वेप नहीं है, ये पेन ड्राइव है, ये कंप्यूटर में घुस जाती है आराम से। एंड ऑफ कोर्स डैड एंड मॉम दे थॉट कि हाँ ठीक है भाई, बच्चे तो करे। आई एम सेइंग फैक्ट्स। सो प्लीज किसी भी बच्चे को फोर्स नहीं करो, क्योंकि खुद से आनी चाहिए ये चीज। जैसे मैं यहाँ पे आया आज, मैं खुद से भी आना चाहता था, बिकॉज टू एटलीस्ट से माई पर्सपेक्टिव अबाउट द कल्चर, ये वो दिस इज फाइन, ये तो ऑर्डिनरी चीज है। हम तो अपना कल्चर रिवाइव कर लेंगे, कुछ नहीं करना है हमें। सोशल मीडिया पे हमारे को एक पेज बनाना है, एवरीवन शुड बी इन इट एंड स्प्रेड एवरी टाइम हम एक पोस्ट बना सकते हैं जिसमें लाखों व्यूज आ सकते हैं। एंड आई नो हाउ टू डू दैट वेरी वेल। इधर आ रहा है क्या रोहित?
Because I'm also a पता social चला हम media जा रहे उधर influencer, ही मैं इधर आ थोड़ा रहे ये भी कर लेता हूँ, छोटे मोटे काम भी कर लेता हूँ, तो इट्स फाइन, परफेक्टली फाइन। ग्रो सब कर सकते हैं, एपी कम्युनिटी ग्रो कर सकती है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। द ओनली प्रॉब्लम इज विलिंगनेस टू डू इट। वो कम बच्चों में है, राइट? एंड फॉर 3-4 years मेरे में भी नहीं थी, मेरे में भी नहीं था कि मैं जाऊं, बात करूं, ये करूं, वो करूं। मेरी लाइफ में इतनी टेंशन है, मेरी लाइफ में ये है, मेरे को ये करना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये अचीव करना है, भले ही वो छोटी चीजें लग सकती हैं लोगों को, मगर दैट्स द रियलिटी। एक मेरी तरह कोई भी यूथ होगा या कोई भी बच्चा है, कोई भी जो भी है, whoever, मेरी एज का या मेरी कम का या मेरी नीचे का जैसा भी है, अगर वो आपके पास आ नहीं रहा है और ये नहीं बोल रहा है कि भाई वी बोथ आर कश्मीरीज, आई मीन लेट्स गो, लेट्स गो आउट समटाइम, कहीं बाहर चलते, तेरे इंटरेस्ट क्या है, वी विल नेवर ग्रो दिस केपी कम्युनिटी इफ वी डोंट सी इट। एंड यहाँ पे यूथ ज्यादा होनी चाहिए थी rather than people who are more mature than us. So this is the reality and these are the some facts that I'm spitting out, क्योंकि कम्युनिटी बहुत रीजन से बढ़ेगा, ऑनेस्टी एंड बाकी की सारी चीज, दैट्स अबाउट इट। अब हम ये नहीं कह सकते कि यार तुम्हारे को तो हम फोर्स नहीं कर सकते। मेरे को समझ में नहीं आता कि कैसे लोग, एंड ऑल्सो माई मॉम एंड माई डैड आर द बिगेस्ट फ्रेंड्स ऑफ माइन। मेरी लाइफ में अगर कोई रहा है ना, मेरे मम्मा है, मेरे पापा है, एंड दे हैव नेवर फेल्ड मी। सब कुछ मैंने बताया है। मेरी गर्लफ्रेंड ये है मम्मा, क्या करूं, क्या करूं, मेरी गर्लफ्रेंड ये है, पापा मेरी गर्लफ्रेंड ये है, व्हाट शुड आई डू, गिव मी सम टिप्स। आई मीन व्हाट्स रॉन्ग इन कश्मीरी बच्चे नॉट शेयरिंग विद द पेरेंट्स? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। हाँ, डिपेंड करता है अगेन ऑन माइंडसेट। लोगों के माइंडसेट अलग अलग है, तो प्लीज खासकर कश्मीरी पेरेंट्स के माइंडसेट आप लोगों को बदलना पड़ेगा, एंड आई वुड से इवॉल्व। हम बच्चे को ये नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चा तो भाई बेडरूम में हमेशा सोता है, बेड पे सोता है, उसको तो नॉर्मल बेड पे आदत है। अब अचानक से उस बच्चे को बोलेंगे नहीं कश्मीरी ट्रेडिशन तुम्हारे को अपनाना है, ये करो ये करो, वो नहीं कर पाए, वो नफरत करने लगेगा, वो नफरत करने लगेगा, वो नहीं कर पाएगा। बार बार सुबह सुबह सेम गाना मैं रिपीट में सुनता हूँ। हाँ हाँ, रिपीट पे, मतलब क्या मुझे इस गाने से हेट्रेड है? नहीं। बट क्या मेरे को इरिटेशन होती है? हाँ, ये मैं सच बोल रहा हूँ। सिंपल थिंग इज कि यू कांट फोर्स योर सन और डॉटर टू ये करो। तुम कश्मीरी ही से शादी करो, क्योंकि जैसे ही जब मैं छोटा था मम्मा ने बोला तुम्हारी कश्मीरी लड़की से ही शादी होगी, मैंने बोला नहीं नहीं, मैं नहीं करूँ, मैंने तो ये बोला, बिकॉज मेरे माइंड में आया भाई क्यों तुम हमेशा कश्मीर कश्मीर कश्मीर, क्यों भाई, मुझे तो समझ में नहीं आया। Then mama told me the whole story. कश्मीर फाइल मूवी बनने से 15 साल, पता नहीं कितने साल पहले, मम्मा ने मुझे कश्मीर फाइल घर पे ही दिखा दी, सुना दी, बेटा ये हुआ था, तुम्हारी कोई बाउंड्रीज है, उसको तुम्हारे को कंट्रोल में रखना है, और ये इसलिए जब मैं बड़ा हुआ तब मैं समझा। अभी शायद मुझे और बढ़ना है कुछ चीजें समझने के लिए, बट तब मैं समझा कि ओ कोई कश्मीरी मुसलमान है यहाँ पे, एनी कश्मीरी मुसलमान,
कोई है? कोई नहीं होगा भी तो बताएगा नहीं। मैं मुस्लिम से शादी नहीं कर सकता हूँ, रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड है। आई कैन नॉट मैरी अ मुस्लिम, क्योंकि मेरे मम्मा ने, जो मेरे पापा ने सहा है, और जब मैंने कहानी सुनी है तो मेरा भी मन नहीं करा। सिंपल। बहुत लोग हेट करेंगे मुझे, बहुत लोग बोलेंगे अरे यार ये गलत है, ये सही है, तू कैसे बोल सकता है कि हर एक मुस्लिम बुरा नहीं है, बट आई कैन नॉट डू इट। क्योंकि जब मुझे स्टोरी पता चली हमारे साथ हुआ क्या, हमारे साथ क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, मैंने नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मैंने मजाक में बोला था गलती से, मम्मा मैं तो मुस्लिम लड़की के साथ शायद करूं। मम्मा का हाथ आया यहां से और बाल ऐसे, तुम्हारी गर्दन सर से अलग हो गई, और कुछ नहीं। ये मेरे साथ चीजें हुई है, यूथ हूं ना मैं तो सच ही बोलूंगा ना, कम्युनिटी को ग्रो करना है तो सच बोलूंगा। यहाँ पे बहुत सारे कश्मीरी फैमिलीज में फैमिली प्रॉब्लम्स है, मे बी इट इज नॉट प्लॉट रिलेटेड, मकान रिलेटेड नहीं, बट कुछ और रिलेटेड है। एंड जेलेसी फैक्टर तो ऐसा है कि पूछो मत। जब भी कश्मीरी फैमिलीज में कोई घर आते हैं ना, भाई घर देखना, हमें घर देखना है कैसा बना है, मैं नोटिस करता हूँ, मैं नोटिस करता हूँ ये सब। एंड इट इज नॉट जस्ट विद माय कश्मीरी फैमिली, इट इज द मोर पीपल विच आई हैव नोटिस माई सेल्फ। केपी कम्युनिटी से बाहर, नॉट इवन इन द केपी कम्युनिटी के बाहर, पालम विहार में बहुत सारे कश्मीरीज है, दिल्ली में बहुत सारे कश्मीरीज है। इनको जोड़ने का एक ही तरीका है, इनको ढूंढना है, मेहनत करनी है, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। दिल्ली जाओ, पिकअप अ बोर्ड, गेट अ वीडियो कैमरामैन, कोई भी फोन है आजकल, यू हैव phone, you need an idea, a good idea phone, and you just have to record videos and you have to spread। आजकल तो इंटरनेट है, लेकिन घर बैठे बैठे नहीं हो सकती चीज, दिल्ली जाना पड़ेगा। कोई कश्मीरी चंडीगढ़ में भी होगा, उधर जाओ, डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा, तभी जाके हमारी ग्रोथ हो। सिंपल, सिंपल। एंड फोर्स नहीं करना है, मैं बार बार बोलूंगा, फोर्स नहीं करना है, बिकॉज जितनी भी आप बार फोर्स करोगे, फोर्स करोगे, फोर्स करोगे, that kid will not like the culture। मेरे पापा ने मेरे को आज तक फोर्स नहीं करा है। पापा सुबह सुबह उठते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, एंड इज लाइक केवन अगर आपको गॉड पे यकीन करा, आप गॉड पे यकीन करो, आपको किसी और चीज पे यकीन करना, आप किसी और चीज पे यकीन करो। बट जब मैं मंदिर हूं, मेरे को 5 मिनट शांति चाहिए। यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल, यू नीड टू इवॉल्व। सो दैट्स ऑल आई कैन से। एंड बाकी का द रेस्ट, इफ यू नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी कुछ मीटिंग्स, गैदरिंग गैदरिंग आप होनी चाहिए, अपने बच्चे को पकड़ पकड़ के लाओ, क्योंकि तभी ग्रो हो पाएंगे। बिकॉज अंटिल एंड अनलेस दीज किड्स वोंट अंडरस्टैंड, आई मीन मुझे भी बहुत सारी चीजें जो समझनी है, बहुत सारी चीजें, ठीक है, अगर मैं नहीं समझूंगा तो कोई नहीं समझ पाएगा। मेरे जैसे बहुत बच्चे हैं जो यहाँ तक नहीं आए, क्योंकि मे बी उनको शर्म आती है, मे बी उनको नहीं यार, नहीं हो सकता, नहीं, हम नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे यार, जैसी लाइफ है वैसी चलने दो। मैं भी आज चुन सकता था, घर बैठे बैठे आराम से अपना काम कर सकता था ऑफिस का, बट आई केम हियर बिकॉज आई वांटेड टू शेयर माय थॉट्स। ऑन टॉप ऑफ दैट,
apologizing from my dad side वो आ नहीं पाए because हमारे close you know someone has passed away. लेकिन again किसी को जज नहीं करना है, किसी को जज नहीं करना है, आप किसी को कर नहीं सकते, आप ये नहीं बोल सकते ये आदमी क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता, whether he is good for our community, whether he is not. एंड जैसा अंकल ने बोला नदुर वगैरह खाने से कश्मीरी नहीं बनते हैं, खून से बनते हैं, ब्लड से. अगर आपका ब्लड सेम है तो आपका सेम, आप कश्मीरी हो, सिंपल. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई मेरे को ट्राई करने की जरूरत नहीं है. नदुर यखनी, मैं कश्मीरी हो गया. मैं नदुर यखनी खाता ही नहीं क्योंकि हमारे घर में इतना नदुर यखनी बनता है. तो किसी बच्चे को बटर चिकन ठूसते रहोगे तो वो तंग आएगा ना, आएगा वो तंग. So my thoughts are very different and apologizing to everyone अगर मैंने किसी के sentiments hurt करे हो, but this is the reality. Oh no, it didn't hurt anything. Thank you so much. Thank you. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Thank you so much, Kevin. What should I say? आपने तो कहते हैं ना पासा ही पलट दिया. But yes, I'm very happy that he has spoken his heart out. यही. Even he has divulged a few secrets about his family. That's taken. That's totally fine. And I suppose This is- everybody sitting over This here is a one enjoyed family. it. Yeah, This is because one this is family. one One family, family. as This is a Mr. family. said. Right. So he has different thoughts, and we welcome all the thoughts of the youth over here. And that is why, as I said in the beginning, that is why probably we are here. And in the coming run, these young people will fetch us more younger generation. So in the next seminar, as Vanshika also said, that we should have triple the number of people we have today, and most of them should be youngsters. Right? So he's talked about many things. And one thing which I really like, that we have to be honest. Everybody has to be honest. It's not only about KP community. In fact, for any community to grow, a community has to be honest. And he just gave an example of one of his friends when he said that he was taking that electric wave, electronic or electric, I'm not sure, wave. And then he said, Papa, ye to pen drive hai, aisa hai, waisa hai. So that means younger generation also needs to be honest with their parents. So that is something they also need to inculcate within themselves. Right. So thank you once again, Kevin. And Kevin is a young entrepreneur from BKRS Pharma. A hand for him, for his honesty in fact. Okay, so next we have Ankita Rana. Ankita Rana, over to you. Sorry, Archana Rana. I'm really sorry. Archana Rana. And when Kevin was speaking, Archana was like, oh my God. These were the expressions on her face. So over to you, Archana. Please go ahead. Okay, hello everyone. Thank you for having me here first, and honored to be with you guys. Thank you, sir. Thank you so much for coming. And वैसे तो मेरे जो येलो फेलो यूथ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ बोल दिया है. तो आई जस्ट से अ फ्यू थिंग्स जो मुझे लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी इम्पोर्टेंट है टू हाईलाइट. एंड बहुत सारी चीजें जिसपे मैं वंशिका से एग्री नहीं करती, बहुत सारी चीजें जिससे मैं केविन से एग्री नहीं करती. जैसे पहली चीज, हम एकदम स्टार्टिंग पे जाते हैं. हमें बोल रहे हैं कि हमें अपना कल्चर रिवाइव करना है. तो अपना कल्चर रिवाइव होगा कैसे, मुझे ये बताओ. हमारा कल्चर आया कश्मीर से, बट आर वी इन कश्मीर? नो. बट जो कश्मीर में लोग ऑलरेडी हैं, जिनको हमारे कल्चर के बारे में शायद हमसे ज्यादा पता हो, क्या उन्हें लाइक आर दे सेटल्ड? क्या उन्हें वो चीजें, जैसे मैरिज की बात करी हमने और हेल्थ की बात करी, जितनी बातें करी, आई वाज वाचिंग अ डॉक्यूमेंट्री यस्टरडे, जिसके अंदर जो कश्मीर के लोग हैं, जिनके पास दे आर लाइक फुल ऑफ जो भी कल्चर की नॉलेज है, they have it all. But honestly, are they settled? वो रेफ्यूजी कैंप्स में हैं, दे आर नॉट मैरिड, उन्हें कुछ भी नहीं पता है, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द डेथ टू कम. लेकिन सबसे ज्यादा नॉलेज अभी किसके पास है? आई गेस उन्हीं के पास. बट आर वी डूइंग एनीथिंग उनके लिए?
जिससे हमारा कल्चर रिवाइव हो सके? आई डोंट थिंक सो। रही बात यही वाली चीज की हमारे पेरेंट्स हैं, आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू बी इन पढ़ो आप यार, छोड़ो उसको। एवरीवन वांट्स टू बी इन कश्मीर। वापस से वो वही छोड़ो, स्काई देखना चाहते नाखून हैं, मत खाओ। वही सैफरन फील्ड्स की जो फ्रेग्रेंस है वही फील करना चाहते हैं, और वही फैमिली लव जो साथ में बैठ के रात का भट्टा साथ में खाते हैं वो सब उन्हें चाहिए। बट यहाँ पे आई थिंक जो मेन पॉइंट है वो है आइडेंटिटी क्राइसिस। अगर अभी मुझे कोई बोले कि तुझे कश्मीर जाना है, तुझे कश्मीर में सेटल होना है, मैं तो नहीं बोलूंगी। मैं नहीं क्यों बोलूंगी? क्या मेरा मन नहीं है? ऑब्वियसली मेरा मन है। मैं क्यों नहीं जाना चाहूंगी उस जगह पे जहाँ पे मेरे मम्मा पापा ने मुझे इतनी सारी स्टोरी सुनाई, मेरे ग्रैंडफादर ने, मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे बताया कि हाउ ब्यूटीफुल ऑफ अ प्लेस इट इज। मैं क्यों नहीं जाना चाहूंगी वहां? बट क्या मैं एक्चुअली वहां पे सेफ हूँ? तो मेन क्वेश्चन अराइजेस कि जाना तो मैं चाहती हूँ बट आई एम नॉट सेफ ओवर देयर। मैं अपने कल्चर के बारे में भी जानना चाहती हूँ, बट क्या मैं वहां पे, अगर हमारे पीएम एंड ऑल एवरी द गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट, हमें एलोकेट भी कर रहे हैं, वो बहुत सारे कश्मीरी पंडित्स की जॉब भी है वहां पे, बट आर दे एक्चुअली इन कश्मीर राइट नाउ? नो दे आर नॉट। रिसेंटली मेरी बहुत लोगों से बात हुई जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के ही हैं और उनकी जॉब्स जो है वो कश्मीर में है, बट वो अभी कश्मीर में काम नहीं कर रहे हैं बिकॉज टारगेटेड किलिंग्स आर स्टिल हैपनिंग ओवर देयर। देखते हैं ना। तो मुझे कोई बोले कि तुझे जाना है कश्मीर में, तो एज अ टूरिस्ट भी नहीं जाऊंगी बिकॉज व्हेन आई नो दैट आई एम नॉट सेफ इन माय ओन होमलैंड, तो मैं वहां पे क्यों जाऊं? आई थिंक सबसे पहला मुद्दा यही है कि हम कश्मीर कैसे जा पाएंगे? हम कश्मीर, क्योंकि स्टार्ट वहीं से जब सब कुछ हुआ है, तो आई थिंक हमें वापस भी वहीं पे जाना चाहिए टू स्टार्ट इट ऑल ओवर अगेन। दूसरी चीज जो हमारे कल्चर के बारे में आती है, आई थिंक जो हाईलाइट करने वाला पॉइंट है दैट इज कल्चरल इरोजन। हमारी कम्युनिटी के अंदर आई थिंक बहुत सारी चीजें, जैसे मेरी फैमिली हो गई, मेरी फैमिली में फॉर एग्जांपल मेरे फादर, मेरे ताऊ जी, मैं मतलब मेरे बड़े पापा, और साइड पे मेरी बुआ, मेरे बुआ के हस्बैंड ऑब्वियसली डिफरेंट, मतलब कश्मीरी पंडित ही हैं, बट दे हैव स्टिल डिफरेंट बिलीव्स। मेरी फैमिली के बहुत डिफरेंट बिलीव्स है, उनकी फैमिली के बहुत डिफरेंट बिलीव्स है, बट है तो हम कश्मीरी पंडित ही। तो आई थिंक ये कल्चरल इरोजन तो है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो हिंडर कर रहा है हमारा रिवाइवल, बिकॉज अपने में ही लोग कंफ्यूज हैं कि नहीं 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 ये वाली चीज ऐसे होती थी, वो बोल रहे नहीं नहीं हम तो ऐसे करते थे। तो आई थिंक जो कल्चरल इरोजन है बिकॉज ऑफ माइग्रेशन, वो अभी तक इट्स प्रिवेलिंग, क्योंकि हमें एग्जैक्ट चीजें पता नहीं है कि क्या होती थी। इट्स जस्ट दैट जो हमने, जो उनकी हमारे से जो यंग एल्डर जनरेशन है, उन्होंने जितना भी गैस किया वो सब वो आ रहे हैं, हमें समझा रहे हैं वो वाली चीजें, बट ऑनेस्टली दे आर नॉट इवन, दे आर स्टिल कंफ्यूज इन देमसेल्व्स कि एक्चुअली में कैसे चीजें चलती आ रही हैं। थर्ड पॉइंट इज, जैसे वंशिका ने बोला वेस्टर्नाइजेशन के बारे में, तो आई डोंट थिंक सो उसका इतना इम्पैक्ट है हर उस पे, बिकॉज आई थिंक सब्जेक्टिव है। मुझे चूज करने का राइट है। मैं कश्मीरी फैमिली से हूँ, मैं बचपन से ही हर समर वेकेशन अपने डैडी के पास, अपनी बड़ी मम्मा के पास जाती थी। मैंने हर तरीके से देखे, हर रात को जब बैठ के हारमोनियम बजा के तुम्बक नाई लेके हम बजाते थे, मैंने वो सब चीजें देखी हैं और मुझे एक्चुअली में इंटरेस्ट आया। और ऐसा नहीं है कि पीयर प्रेशर की वजह से किसी को भी कुछ भी मतलब इन्फ्लुएंस हो रहा है, क्योंकि मैं भी कॉलेज में गई हूँ, मैं थिएटर में थी 3 साल, और वहां पे एक्चुअली एवरीबॉडी वाज सो इंट्रिग्ड इन आवर कल्चर, जो मेरे से आके पूछते थे, अच्छा तुम लोगों के यहाँ पे तो वाजवान होता है, तुम्हारी इतनी सारी डिशेज होती हैं, और दमालू तो तुम्हारे बहुत फेमस है। और ऑनेस्टली आई डिड नॉट सी एनीवन टू टॉक बैड अबाउट आवर कल्चर। आई मीन देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, जो एक और चीज हाईलाइट कर रही थी मैं, कि हमारी कम्युनिटी के अंदर ही जो हम यूथ हैं, दो चीजें, एक तो यूथ में भी ना 2 पॉपुलेशन डिवाइडेड है। एक जिनको अपने कल्चर से प्यार है, ठीक है, और वो इंटैक्ट है अपने रूट से। दूसरी वो जिनको आई थिंक मॉकरी में ज्यादा मजा आता है, बिकॉज आई नो मेनी ऑफ यू विल, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल अग्री टू इट, बट कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के बाद भी देयर वर अ लॉट ऑफ डिबेट, और उस डिबेट में भी देयर वाज अ लॉट ऑफ मॉकरी
people used to come and, oh यार तुम लोग तो भागे थे, तुमने तो ये किया था, तुम भागे थे तो अपने वाले से, and अभी भी जोक्स बनते हैं, ओ पत्थर मारो, पत्थरबाज आ गया, समथिंग लाइक दैट, which is still, I don't know, हमसे ऊपर वाली जनरेशन को चीज पता है, बट वी फेस इट, हमें बोलते हैं। मैं 21 साल की हूँ और मेरे को पता है ये चीजें होती है, हमारे यूथ में जो बनते हैं, ये जोक्स हमारी कम्युनिटी के ऊपर जोक्स बनते हैं, बट उस चीज को कैसे फिल्टर आउट करना है वो हम पे ही है। बिकॉज अगर मेरे सामने कोई जोक मार रहा है, मैं उन्हें उसी टाइम मैं वहां पे चीज पॉइंट आउट करूंगी, मैं उनको बोलूंगी दैट इफ यू डोंट नो अबाउट आवर कल्चर देन यू आर नो वन टू जोक अबाउट इट। दूसरे वो है हमारे यूथ में कश्मीरी कम्युनिटी के जो उस जोक पे हंसेंगे एंड दिल अग्री टू इट। अग्री भी नहीं, अगर तुमने हंस भी दिया है ना उस चीज पे, दैट मीन्स यू आर एट फॉल्ट देयर, तुम उस चीज को बढ़ावा दे रहे हो, तुम अपनी कम्युनिटी के हो गए, इफ यू नॉट एबल टू पॉइंट इट आउट देन देयर इज नो पॉइंट। बिकॉज हमें अपनी कम्युनिटी को रिवाइव करने के लिए पहले उसे रिस्पेक्ट देनी है, उससे प्यार करना है। अगर हम ही उस पर जोक्स बनाएंगे तो आई डोंट थिंक कुछ हो पाएगा। अनदर थिंग दैट इज साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अब मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं 6th क्लास में, मैं कश्मीर सिर्फ एक बार गई हूँ, when I was in 6th standard। तो वहां पे क्या होता है, जब we were coming back, हमारी पूरी फैमिली थी, मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मा, माय दादी, everybody was there। तो क्या हुआ, जब हम वापस आ रहे थे श्रीनगर में थे आई गेस हम, तो देयर वाज दिस प्रोटेस्ट हैपनिंग एंड हमें किसी ने बताया दैट मिलिटेंट्स आ गए हैं, तो आर्मी एंड ऑल, तो पूरा वहां पे कर्फ्यू टाइप लग गया था एंड जो ट्रैफिक था वहीं पे रोक दिया था एंड वी वर इन वन ऑफ द जम्मू के कार्स। तो अब उस टाइम पे मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, आई वाज अ किड, और मैंने जो डर देखा है मेरे फादर की आंखों में, मेरे बड़े पापा की आंखों में, even my mother, everybody was scared that what is happening। and ये चीज वहीं से आई है कि अब वो वाली चीज भी छोड़ के अगर एक और चीज बताऊं मैं, that my mother and जो मेरी बड़ी मम्मा थी, उन्होंने फटाफट अपनी बिंदी हटा दी। ये फियर क्यों है, बिंदी हटाने का पॉइंट क्या था? तो वो चीज आई थिंक, इतनी छोटी थी मैं, वो चीज मेरे दिमाग में इट्स इम्बाइब्ड। I don't know why they did that. It means the fear is still there. Identity and the sense of belongingness, the crisis is over there. क्योंकि वो बिंदी हटाते ही we were also like कि अच्छा क्या हो रहा है? Okay, okay, अगर मतलब बिंदी लगाई है तो they will know that we are Hindus. वो तभी हमने बिंदी हटा दी। तो I think वो बचपन से ही जो fear है of not going back to our homeland, वो वहीं से ग्रो हुआ, because we are still scared. We're still scared, and not just us, even if हम लोग ट्राई भी करें पुट फॉरवर्ड कुछ भी करने का, वो दिमाग में फियर रहेगा ही दैट आवर पेरेंट्स आर आल्सो स्कैर्ड। वो भी एक टाइम पे, वो हमसे बड़े हैं, उन्हें तो नहीं डरना चाहिए ना, बट वो भी डर रहे हैं। तो आई थिंक दैट हैज एक्चुअली, मतलब जितने भी बच्चे होंगे यहाँ पे, जितनी भी यूथ होगी, Hello. Am I audible? Okay. तो hello. Okay. So psychological impact का point यही था. Now I'll come to the community dynamics, जो already जिसके बारे में मैंने explain कर ही दिया है काफी, कि we are हेलो या वी आर स्टिल कंफ्यूज्ड अपने में ही दैट हम कौन से रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो जब तक वो चीज नहीं होगी, आई थिंक वो तभी आएगा जब एक्चुअली में हम लोग सारे मिलके ऐसे सेमिनार्स या फिर कंपटीशन ये सब करते रहे। और इससे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है, बहुत प्रोमिनेंट चीज आती है, हमारा कश्मीरी डांस होता क्या है, नाम क्या होता है हमारे कश्मीरी डांस का? रूप डांस, एग्जैक्टली। बट क्या हमें पता है, क्या हमें सिखाया जाता है बचपन से कि रूप डांस है ये? हम क्लासिकल डांस सीखते हैं, हम कथक सीखते हैं, हम भरतनाट्यम सीखते हैं, बट हमें क्या कभी भी हमारे पेरेंट्स ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कश्मीरी डांस सीखना चाहिए, लेट्स ट्राई रूप डांस सीखो। जब हम अपने कल्चर की जो मेन चीजें हैं, म्यूजिक हो गया,
फूड हो गया, इन सब चीजों के बारे में जब हमें पता ही नहीं है, हम इसे इतनी प्रोमिनेंटली आगे लेकर ही नहीं आ रहे हैं, तो हमारा कल्चर रिवाइव कैसे करेगा? अगर मुझे बचपन से सिखाया जाता कि नहीं 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 तुझे रूप डांस करना है, जैसे हमें भजन सिखाते हैं, वो वाली चीज तो आई थिंक हर घर में होती है। कश्मीरी पंडित के सुबह सुबह भजन चलते हैं और हमें सारे याद होते हैं, चाहे हमें कश्मीरी बोलनी आए नहीं आए, लेकिन हमें सब कुछ याद होता है, हमें समझ आती है। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ दैट कि हमें कश्मीरी क्यों समझ आती है। तो जब तक वो वाली चीज नहीं आएगी कि हमें डांस के बारे में नहीं पता चल रहा है, हमें म्यूजिक के बारे में पता नहीं चल रहा है, और इवन इफ समवन कम्स टू मी एंड आस्क्स कि तुम्हारी डिशेस क्या होती हैं या जो भी होता है, आई नो थोड़ी बहुत चीजें, मुझे ज्यादा नहीं पता, मुझे बस पता है दमालू और नदर यखनी, हाक, यही सब पता है, मुझे ज्यादा कुछ पता ही नहीं है। लेकिन देयर इज अ लॉट टू इट। व्हेन यू रीड गूगल और तुम गूगल पे जाके सर्च करते हो, देयर इज स्टिल अ लॉट टू इट। आवर कल्चर इज ब्यूटीफुल, it's vibrant, and there's so much to learn, but actually we do not kind of हम put forward नहीं करते अपना foot to learn all of it। बाकी थोड़ी बहुत चीजें जो आई थिंक अभी इस डिबेट में बोली गई थी विज ऑफ मैरिज। तो आई डोंट थिंक व्हाई मैरिज इज बीइंग सो प्रोमिनेंट ओवर हियर, बिकॉज मुझे लगता है कश्मीरी फैमिलीज में ना ये चीज है, जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है 20 साल का 21 साल का, बस दे तो शादी 25 पे करवानी है। क्यों करवानी है? 25 पे करवानी है, पर क्यों करवानी है? नहीं नहीं तेरी शादी तो अभी करवानी है। अरे शादी 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 नहीं सुनना है शादी के बारे में। हमें हमें हमने इतना कुछ देखा, आप लोगों के साथ इतना कुछ हुआ, हम चाहते हैं कि हम कुछ कंट्रीब्यूट करें। मैंने अपने ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर वाज, दे वर अ फैमिली ऑफ, आई मीन उनके ही जो सिबलिंग्स थे, दे वर 8 of them, and my grandfather being the eldest, he kind of started his family from scratch. It was not easy. Starting everything from scratch is not easy. उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। इवन व्हेन माय ग्रैंडमदर टुडे टेल्स मी अबाउट कश्मीर की स्टोरीज, शी क्राइज। वो भद्रकाली मंदिर गई है, वो रोई है, वहां की स्टेयर्स जो इतनी बड़ी होती हैं जाने के लिए, वो वहां जाके रोई है। बिकॉज अगेन बहुत ज्यादा इट्स वेरी क्लोज टू मी, बट दिस स्टिल स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच एंड इट्स नॉट इजी। आज की डेट में समथिंग लाइक दिस हैपेंस, वी वोंट बी एबल टू डू इट। I won't be able to do it. Nobody will be able to do it. What our grandfathers and fathers and grandmothers did, sacrificed everything to give us this space. I mean, you should give a huge round of applause, and you should appreciate them for being so generous to us and for doing everything in their power to give us this life. So, इसी पे आते हैं that अगर मैरिज वाली बात है तो आप इतना फोर्स मत करिए, प्लीज मत करिए। हमें नहीं सुनना है मैरिज के बारे में, हमें ये बताओ कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमें ये बताओ कि दैट देयर इज स्टिल सो मच इन योर करियर, और तुम इतने अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो दैट यू मेक योर कश्मीरी कम्युनिटी प्राउड। वी वांट टू हियर दिस, वी डोंट वांट टू हियर अबाउट मैरिज। मुझे नहीं सुनना है मुझे कब शादी करनी है, मैं तब शादी करूंगी जब मेरा मन करेगा, मैं तब शादी करूंगी when I feel now I have accomplished everything in life and I have given everything to my parents। जितना सैक्रिफाइस उन्होंने किया मैंने रिटर्न कर दिया है। नाउ आई थिंक आई शुड सेटल माई सेल्फ। दिस इज व्हाट आई वांट टू हियर, नॉट अबाउट मैरिजेस। दूसरी चीज जो आती है अभी सोशल मीडिया वाली, तो आई थिंक सोशल मीडिया का देयर इज अ ह्यूज इम्पैक्ट आज के डेट में। एंड ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे पेजेस नहीं बने हैं। इवन आई एम पार्ट ऑफ, लाइक अभी तो पार्ट ऑफ मेनी पेजेस जो कश्मीरी कम्युनिटी को हाईलाइट करते हैं। बट प्रॉब्लम इज दैट इवन अभी जैसे केविन मेंशन दैट ही विल मेक अ कम्युनिटी लाइक दैट, देयर आर कम्युनिटीज, सी वी वर नॉट अवेयर अबाउट इट, दिस इज द प्रॉब्लम। हमें पता नहीं है क्या क्या चल रहा है, इवन हम कश्मीरी पंडित्स को ही नहीं पता क्या चल रहा है। सो आई थिंक इग्नोरेंट होना अपनी मर्जी से और होना उसमें बहुत डिफरेंस है। इफ आई ट्राई, मैं देखूंगी अगर मुझे कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, सर्च अबाउट इट, फाइंड इट, और मैं उसका पार्ट बनूंगी। तो यही डिफरेंस है दैट बीइंग इग्नोरेंट इट्स अ चॉइस। या तो तुम हो रहे हो, तुम्हें पता नहीं है, बट इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट you have to research about it and you have to go ahead with that. That is something else that I want to highlight. And
ऑल्सो एक और चीज की ना बहुत कंप्लेंट है, इंजीनियरिंग में कुछ नहीं रखा है। तो भी बोलना बंद करो दैट इंजीनियर्स ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। when I was when I completed my 10th standard, मुझे अभी भी याद है, मैं 11th standard का फॉर्म भरी थी एंड उसमें साइंस और कॉमर्स एंड कॉमर्स विद मैथ्स का ऑप्शन था मेरे पास। एंड माय फादर विद मी एंड ही वाज सेइंग साइंस कर साइंस कर। I said, no, I don't want to do science. मैं कहा पापा नहीं मुझे साइंस नहीं करनी। He was like, नहीं 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 साइंस कर साइंस कर। तो क्यों करना था? तो यार अभी नहीं, वो बचपन था। या तो तुम्हें डॉक्टर बनना है या फिर तुम्हें इंजीनियर बनना है। और भी कुछ चीजें हैं, हमें अपनी कश्मीरी कम्युनिटी को ग्रो करना है, तो हमें सिर्फ इंजीनियर स्टूडेंट्स चाहिए। ये जो हर फील्ड तो सिर्फ इंजीनियर तुम जाएगी। आई डोंट थिंक सो दैट विल हैपन ऐसे। तो ये चीज प्लीज बोलना बंद करो। आई टू कॉमर्स विद मैथ्स एंड मैंने वहां पे वो रिबेल वाली हरकत कर दी, बट एक्चुअली दैट इज व्हाट आई वांटेड सो आई डिड इट। तो ये वाली चीज है दैट इंजीनियरिंग में कुछ नहीं रखा है। प्लीज डोंट फोर्स अस टू ऑप्ट फॉर साइंस बिकॉज हमारे लिए बहुत सारे अदर डायमेंशंस भी हैं। एंड यही चीज थी जो मेन आई वांटेड टू हाईलाइट। और उसके अलावा वही रिश्तेदार भी, मतलब इवन इफ यू आर विजिटिंग समवन एल्स, आपको उनके बच्चे दिख रहे हैं दैट दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंट इन लाइफ जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा। ओ ग्राफिक डिजाइनिंग, व्हाट इज दैट? डिजाइनिंग क्या होती है? ये तो कोई नहीं करता, ये क्या करते हैं? तो जज मत करो, दे आर ऑल्सो डूइंग समथिंग जिसके बारे में आपको नहीं पता। वहां पे अपनी कश्मीरी कम्युनिटी के बारे में बता रहे हैं, पीपल विल नो दैट इज अ केपी। Honestly, I would like to conclude this my part by saying one thing, जो बहुत ही I think important है अभी के लिए, that I don't want to be remembered by someone who who migrated or was a part of this exile. Honestly, मैं नहीं चाहती कि हमारी कश्मीरी कम्युनिटी, ऑब्वियसली लोग एक्नॉलेज करें कि हमारी कम्युनिटी ने कितना कुछ कितनी हार्डशिप्स झेली हैं, बट मैं नहीं चाहती कि हमारी कम्युनिटी को लोग इसलिए याद रखें। आई वॉन्ट माई कम्युनिटी टू बी रिमेम्बर्ड बाय देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, कि इन्होंने इस फील्ड में ये कॉन्ट्रीब्यूट करा है एंड कश्मीरी पंडित्स ने एक्चुअली इतना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करा है। Because if you take the example of, I think I was talking to Ajay uncle the other day, and he told me to read about some of the prominent people of Kashmir. And one of them was Kashyap Bandhu, if you have heard of him, and the other one was Queen Vidhan. So I was able to, read about them, and I was like, sure, I did not know about them. So I think both is there's a sense of, I don't know, I feel proud reading about them that they were Kashmiri Pandits and they did something अपनी community के लिए. So I want to be remembered by that. कि हमारी community के बारे में अगर लोग कुछ भी सुन रहे हो, अच्छा कश्मीरी पंडित के बारे में बात हो रही है, ओह इन्होंने तो ये किया था, इस फील्ड में ये किया था। I don't want कि हमारे बारे में बात करें, अच्छा exile हुआ था, oh they face ये, acknowledge करो, but don't remember us by that. So that is all I wanted to say for today. Thank you so much. Thank you so much, Archana Rana. See, right now, Archana. यार नमस्कार महाराज। अच्छा तो वो न को मत किसी सीढ़ी हो सकी शहर में लग बासान जी डिसलोकेट को मुझे इसमें चिमटी है, बच्चे और पांच ना लोग मुझे ना आज में बासान बस ये को मुझे क्या बोलते हैं
Just stretch go mut na also thoda swelling. Psychiatrist doctors orthopedist. नमस्कार महाराज हमारा तुलना में शिवानी जी वाला वजन हमारा अंगूठा ही अच्छा ये तो पेन है अंगूठा वंजी सुई उसको पकाता नंगे से पका ऑर्थोपेडिक्स हमारा में बाज़ में वो ना वेट वाले सीडी में किस बागस तभी तो गाँव शायद में तभी तो माम गाँव था क्योंकि उस दिन से ही पेन हो रही है बट मुझे लगता है कि मैं वो ये तो यहाँ पे इस जगह अर्थराइटिस तो थोड़ा बहुत चोर वरी प्रोन तो मैं बस समाज बे एग्रीवेट हूँ यूरिक एसिड हाँ वो भी यूरिक एसिड में कि अर्थराइटिस तो है थोड़ा सा विठल 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 जी अपने को म्यूट करो विठल जी अपने को म्यूट करो बे हमारा मिशन आर्ट्स फॉर्मल के हमेशा इकोनॉमिक्स विठल जी अपने को म्यूट करो कैसे पान ठीक हाँ कैसा कैसा Hello, we are not hearing any voice or not seeing any video. Can you share the video, please? No, we are not able to see the video. थोड़ा 10 मिनट रुक जा बचते जी ना ऐसे ही ठीक है शिवन 10 पर मेरे गरम से पर चाय बना अच्छा much. And right now, like these fellow mates of ours are saying that
they have made a lot of difference in. They have also pinpointed all the the points that we are lacking in in our community, and the point that we are organizing like a youth festival for all the members, and we will try our best to get all of the members involved, and we will have lot of opportunities for like young guys also, and lot of new talents also on that platform, and we will try our best for spreading all the information to all the young generation also. So yeah, thank you. So, hi guys, my name is Abhinav, and I guess as the panel discussed here, there are a lot of steps that we have to take to ensure revival of our Kashmiri community. So, I think this youth festival would be the first step towards that, and I would encourage more and more young generation to come here rather than mature generation, I would say. So, yeah, I'm hoping to work with the team and create a really good festival. Good evening, everyone. My name is Ishan, and as I listen to my fellow mates, Kevin and all, sharing their experiences, so this also, like, I believe this must have motivated us to bring our, like, to revive our culture, to like have that kind of experience. क्योंकि अभी जो यंगर जनरेशन है, जैसे मैं अपनी अगर बात करूँ तो मेरे को भी इतना कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि मैं अभी इस एरा में इतना मतलब एक्सपोज हो चुका हूँ कि मैं अब वो अपना कल्चर अब मेरे दिमाग से निकल रहा है. बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक this would be an immense boost to revive our culture back, and I hope everyone would join us, and we will have a lovely time. Thank you. Hi everybody, my name is Arpit, and like everybody said here, we have to encourage everyone to come, to listen, to share their stories also listen everyone's stories. So we can learn about our culture more and more and evolve our culture, expand our culture in different countries also, not in India, but people who live around the world, all the Kashmiris, and we'll try our best here. Hey everyone, thank you so much for coming here. It's a great initiative that we have started over here, and really can't wait to see how things unfold next. And would really love to see like more people coming up over here, like more people from the younger side. Today we have a abundance of old people here. No offense to anyone. We won't come now. We won't come. We won't come now. यही चाहते हो ना? Thank you, Nikhil. Over to Deepti. Thank you, Acharya, and thank you, everybody. Nikhil, Arpit, Ishan, Abhinav, Rishabh, and Himanshu. See, I've not grown so old yet. I remember all the names. I've given you the proof. Anyways, thank you so much, and I wish you all the best. And definitely, yes, we'll always be there as a back-end support for the youth festival. But yes, you people will take the lead. Kevin will be there, Vanshika will be there, Archana will be there, and many more to follow. Obviously, yes, Rohan will also be there. Probably he doesn't feel that he's too young, but I feel he's young, but he's not here right now at the stage. But anyways, thank you so much. All the very best to you people. Now we'll move ahead with the program. One thing I just want to add: Roof is not our dance. Just to make that clear, Roof is not part of Kashmiri Pandit dance, right? Just because over a period of 1,000 years we're so suppressed that we couldn't expose our own. So if you just go by the history, we had our own dances, but Roof is not our dance, right? So another thing to explore. That was my counter to Archana. Yeah. That was my counter. Don't try now. While you go back, don't try to just practice that and all that. That will be a waste. So that's what we have to explore. That is a Muslim, as in that belongs to that dance belongs to Muslim community. So that is what we have to explore, and that is where the youth has to come forward and do it. So rather than countering one another, it's better that we as a team work on it
and try to find it out what all other things, which Archana also said that there are many things which we were not knowing. What all other things are there in our culture, and our culture is really beautiful. There are no two opinions about it. That's for sure. So without much further ado, let me request Sushil Pandit ji to please shed some more light on today's topic. Sushil Pandit, please, sir. Dhanyawad. Thank you. How much time do we have? Lot of time. You can take another half an hour, sir. You're serving dinner after that? Obviously, yes. Namaskar, Saini. Namaskar. It's a wonderful experience listening to the young friends we have today. Am I audible now? Yeah. Okay. Should I start all over again? It was a wonderful opportunity to have our young friends today and speak. They did very freely. And that is illuminating. It did confirm a lot of, I would say, apprehensions, but some of the concerns, some of the gaps that I had imagined exist, and they do exist. And they are not to be blamed for it. I can understand where they're coming from. But what I am really grateful for is the sheer honesty and candor with which they spoke. And it is tribute to their parents and the families where they did inculcate this courage and sense of honesty to speak about what they feel, how they feel, without worrying about how they will be judged if they say this or if they say that. And that is fascinating. When I was their age, I would have thought 1,000 times before saying a few things that I heard. So, thank you so much for being so candid. A lot of things have been said. I don't claim any capability of addressing all of them in the best possible manner. I will only share some of my responses to it, and these are extremely critical things. First of all, the words, we've used some of the very important words very often. Word like identity. Sometimes it is used casually, meant differently. It's a very important aspect of defining who we are, how we define ourselves. At a very basic level, we are all human beings and we have a human identity. But then, as human beings, we are about 8 billion of us on this planet now. So at a commodified level, like rice in a bag, it's all the same. But when you say that I am a Kashmiri Pandit, as opposed to, let's say, Malayali Nambudri or Cossack from Kazakhstan, what is it that distinguishes you? Talking about marketing parlance, Kashmiri Pandit as a brand, then what does that brand represent? What image do you conjure up in your head when you hear that so-and-so is a Kashmiri Pandit or a Hindu from Kashmir Valley? What is expected of you? Or what do you think you are? How is it different?
from the fellow you attend class with in your school, share your bench, eat your lunch with. I'm not for a moment saying that you are superior or inferior, but there is a sense of difference. How do you represent that difference? Unfortunately or fortunately, in the present milieu, when we go to school, say live in Gurgaon, go to Sri Ram Monastery and study with 50 different identities sharing the same space and classroom and school and canteen. These distinctions get into a melting pot. You lose some of your significant, special attributes, you gain some. And then over the years, you become similar looking people, similar thinking people, similar talking people. So you lose that identity to gain a new identity and forge a different identity. That happens. It's part of the process. But what you retain even after that is important. He's absolutely right, Kevin, when he says that eating another yakni day after day doesn't make me Kashmiri Pandit. He's absolutely right. What he's not said but meant is, we have we reduced being Kashmiri Pandit to eating damalu and another yakni? Is that what we have reduced our identity to? Is that who we are? Or is there more to us? What makes an identity? There are several markers of identity if you speak sociologically or in anthropology terms. Language is one of the very important markers of identity. Language of which you are a native. You can learn French and perhaps speak your French better than your Kashmiri, but that will never be your identity. It will be a skill probably you acquire. You can speak English with distinction. You could speak Bangla if you like the language as I do. But that won't become your native identity. Your innate identity would still be, even if you can't speak that language for some time, will be Kashmiri. What would be happening in the process is your identity would be dying bit by bit. You lose your language, that bit of identity gets chopped. You lose your cuisine, another bit of identity is lost. You lose your habitat, a huge chunk of identity is lost. You lose your way of looking at life, the value system, another bit of identity melts. You live in a different kind of house than you used to be, another bit of identity is gone. I tell you, I don't know whether you use this word ever. In Kashmir, there's something called Vurusi. How many of you know this word? I see barely 3 or 4 hands and 5 maybe. ऐसा सा dub आसान. David heißt den Hachiv planks आसान. The West carving आसान. You used to have planks, wooden planks. They would run on channels and you would raise. Okay, and you would call them gurus, not windows. That was the kind of houses you lived in. There used to be a prayer going where I would spend most of my time because I didn't have kids my age and I used to just keep looking at stuff dumped there for decades and not looked up. Asan, coins is asan, dawat is asan, kalam is asan, rudraksh is asan, prany is asan. All that old junk dumped there, I would look at them and go through them, rummage and see
what's happening? And that was Berkani. And if I was not to be found anywhere, they would come looking for me there. Hey, Bachina. Or how we slept in groups, Akbar Lev, Pekushing. So the way we lived. So when you, these specific things, another one, mal Gogje, Pool, Wangan, Alhechmananas. To be honest, I don't know how many of you kids know, even have the sight of I know very well. Very good. I'm so happy. I'm so happy. But lot, let me tell you, you are an exception if you do. Now, identity is made of some of these small little parts, and none of it alone represents. None of it alone represents the kind of clothes you wore. And indeed, I haven't come to yet music and dance and art and philosophy and the belief system and the festivals and the rituals and the cuisines in those festivals. And you got to know about it and you got into it by doing it, not just watching it. Mitch wrote Telmid Majsuit Pankhat. And that's how I learned. Through sheer curiosity, she would resent my being in the kitchen, but I would insist. No, I want to see what you do, how you do it. And that's you learn. That's what you learn. And all of it put together gives you a distinction, a distinct flavor. Because then I would take that road to my school and distribute it among my friends, and they would say, "What is it?" And I said, "This is what we make on Vinayak Soram Ganesh Chaturthi." And they want to have more of it, and I would say, "Come home." And they would come and they still remember. Sushil, tere ghar jaake teri maa ke haath ke root. So that is what they remember about a Kashmiri Pandit. But not that alone. That's just one of those things. My mother's dejuru, her traditional jewelry that she would wear very proudly and would stand out as a Kashmiri woman. Was that alone? No. But unfortunately today, the symbolism of being Kashmiri is reduced to just these 3, 4, 5 things. Wear a dejuru, eat a tamalu, talk about road, Yamilet is Gutnupan, Chalo road kind of thing. Things keep getting slipping out of your hands through the fingers like sand. And one fine day you realize that, what kind of a rootless Kashmiri are you? Because a whole lot of things that make you someone distinct, different, special, a whole lot of those things have gone away. I'm not saying that next Harith you now start in, playing with hi. Chalo ji, audio se khelo, sunki aisa kiya karte. You have to modernize, you have to move forward, build new traditions, evolve new, innovate new ways of redefining yourself, renew yourself. You don't have to be stuck in time. And how do you do this? Needs to be thought through. Needs to be forged through by bringing thinking minds together. You talk about Kashyap Bandhu. Kashyap Bandhu was a social reformer who told our women, please get rid of this Ferran, this wretched Ferran, start wearing saris. And my Nani, I never saw her in a Ferran, she used to wear a sari. That was the reformer. Stop looking for dowry, and that is it.
reforms happened. And we were as proud Kashmiri Pandits as we ever were with those reforms, with that renewal, with that progress. So I'm not saying get stuck in some tradition for centuries and stick to it just because our parents, forefathers pursued it. But how do you get to know about it? By reading and knowing and becoming curious. If you are curious about your identity, it should not let you sleep if you're curious. And there is enough and more to find out. What were our ancestors wearing when before Heron was imposed on? Okay. And there are pictures, there are sketches, there are paintings, there is even sculpture, the tradition, that heritage available, which tells you as to how your ancestors used to dress. There's something they used to wear called kanchuk, which was for the torso. For the legs, it was called janghala. People don't even know some of these words, but if someone like Shemendra writes about the society 1,000 years ago, before the advent of Islam in Kashmir, he mentions in great detail, since you are, let's say, a theatre person, if you were to enact one of the plays based on Shemendra's short story, you will need to do the costume to be authentic. And that's where you will know. This is what they would, and it was according to the climate. They would wear leather shoes, which were higher than the ankle height, into which the janghala was tucked in. And he would describe this. It's there for us to know. Unless we don't want to know and have discarded it, and we say, okay, Ferran, which is a distortion of the Persian word Pairahan, has been adopted as our tradition. Then good luck. And there are several such things. Roof, indeed, is again an imposition. Now you say, what was our dance form? All the classical dance forms today you see in India origin from Kashmir. Whether it is Bharatanatyam, whether it is Kathak, whether it is Mohiniyattam, whether it is Odissi, they all emerge from Bharat Muni's Natya Shastra. Bharat Muni's Natya Shastra is impossible to read or to explain or to teach unless you keep Acharya Abhinav Gupta's Abhinav Bharati alongside. It is a treatise on it. And it explains very well. It explains bhavas, it explains mudras, and it is sculpted to a great detail. Only if we want to know, otherwise it's there. And see how other communities, different parts of India, have taken to it like fish to water. And today, it is difficult for you to even claim them as yours. Because you no longer practice it, you have forgotten about it. That is the tragedy. Thank God it has survived in others' hands. And today they tell you, see, this is what our forefathers learned from your forefathers, and see how we preserved it. Dr. Padma Subramaniam went up to the Gopuram of a temple called Brihadishwara in Tanjore. Those days, cameras, I'm talking about early 80s, had those rolls. The color photography hadn't come yet. So black and white film rolls, she would get onto a ladder on a scaffolding to click pictures of the sculptures on the walls of that Gopuram in order to revive the earlier pristine mudras
which were prevalent at the time of sculpting of that temple, which is more than 1,000 years old. Sorry. In order to revive that old style. And she got her PhD on that. And try understanding that all this went out from Kashmir. We talk about Kalposh, for our women. Posh is a distortion of the Persian word posh. Nakaf posh, maize posh. So, something to cover your head with is Kalposh. In our tradition, you never covered your head. You see the sculptures with amazing hairstyles prevalent in Kashmir. There are 5 kinds of hairstyles. They have found hair pins and hair bends in archaeology, in archives. Which means we took great pride in dressing up our hair. There was a sense of aesthetics, Saundarya Shastra. Look at the kind of jewelry our women wore and flaunted. We were a liberated society. We had to perforce start covering our head because this was an imposition from the invaders. And we start accepting that as a tradition. So we need to first of all find out what is our tradition, what is our identity, how is it distinct, how we made that contribution to the world outside. We need to reclaim it, rescue it for our own self. That is the challenge. I don't blame the kids who don't know because our parents and grandparents did not pay much attention to it. To pass it on, that is the crime we committed. And our children have to fill in for that. Work extra hard. You're not going to get it ready-made from your parents, from my generation. I hold my generation responsible for all the groping in the dark that is happening, the generation of Kevin or Vanshika. We are clutching at the straws, literally scraping the barrel. Or just small little things that we could cherish as remnants of, debris of a culture that has collapsed, a civilization that's been annihilated. That's the second thing we need. What has happened to our community? It's easy to say we don't tell the truth. Because that's what you see and notice. It's easy to say that we don't readily trust each other. Because that is what you experience. I don't blame you at all. It is a fact that we don't gel so well as a community as we must. But that is what you see now. That is what you see after more than 600 years of being destroyed systematically and relentlessly, ruthlessly. Let me give you an example. I am told, not my personal experience, when some of us ran away from Kashmir, we didn't even have time or thought of telling our relatives and friends that we are going. Where are you? Are you coming along? Or do you plan to leave? When do you plan to leave? We never discussed this.
And when we landed in the camps at Gita Bhavan, and we came across each other, we didn't have a face to face each other. Because the question writ large on our face, if not asked, was, "Hey, but you can't ask that question because you never told him when you left. He never told you when he left. And he ran off with scant regard to the relatives and the friends you left behind. Because in the last 600 years, the level of persecution and torment we suffered really pushed us into the corners of survival. Somehow survive. Do anything just to survive. Look at any community who's gone through this grind. I think you'll understand. Why does a person behave awkward? It's something to them. That they've lost some of their values. That they are so selfish, so scared, immediately willing to let go of the identity in order to not receive any harm, not fight back immediately, not resist, not resent, somehow change your way. सामने से आ रहा है तो रास्ता बदल दो, पंगे में मत पड़ो. ये कोई आपको सिखाता नहीं है बैठ. एक थीसिस है transgenerational trauma. Psychoanalysts have written this down, that when you face such relentless genocide, it gets things into your psyche. And then it becomes part of your behavior. Before you even realize, you don't decide one day to do this and not do that. So, before we, start lambasting, start calling out, why this and why not? Try and understand. Develop some patience to see how the community that you are part of has traversed the last few centuries. What has happened to them? What has happened to their temples? What has happened to their gods? What has happened to their knowledge traditions? What has happened to their music, their art, their dance? If you read Tawfatul Ahbab, which is about a Shia missionary who went to Kashmir to convert people, he says at the onset of spring, at the foothills of this Parvat, all of them would get together to sing and dance and have picnic, and they would drink wine from big pitchers. This was the festival of Sot, which is onsetting of spring, going away of snow. Now, forget ever having seen this. For centuries, nobody would even mention it because it would amount to asking for trouble. And today, it has disappeared from any collective celebration, has disappeared from our tradition. You are confined to your homes and do it in hiding. For a community who was scared for their own gods who were supposed to protect them, can you imagine the level of lack of faith that would bring in?
You turn to God for safety, for security, for blessings. Here they can't save themselves, you can't save them. What are you left with? So we need to know. We need to know more about ourselves, what we've been through. How does it sit with the aspirations of Archana or Vanshika or Kevin? You want careers. You want to reach somewhere in life, have a sense of achievement. You have plans. You get to live one life. And you don't want to be told how to live it, what to study, what career to go into. It's a decision you want to take yourself for adults. And very right. Why not? This is something, it's entirely your privilege. All of us, we can't be forced into one thing or the other. What we can do as parents, as elders, is to equip you with enough information, enough wisdom, enough knowledge, enough options, so that you can make an informed choice. And in doing so, I think a larger question also needs to be addressed. And that is critical, I feel. I feel when I had to make that decision, somebody had told me that. And since nobody told me that, I would not like to give you that alibi. Okay. I came across a word called Upajivika. Am I boring you guys with a No, not at all. Sorry. I came across a word in Sanskrit called Upajivika. So I asked my teacher, I said, what is Upajivika? And he said, Upajivika is what you do in life to keep your body and soul together and to discharge your social responsibilities, your family responsibilities. But I thought that was Jivika. Jivika is livelihood. And livelihood is to earn your living. He said, no. That is Upajivika. Upajivika is how you, in what you call, earn a living, generate resources in order to meet your expenses, meet your needs, and also meet the needs of those who depend on you. I said, then what is Jivika? The Jivika is something that you do as the purpose of your life. What you think will make your being born and living worth it. What you think after 60, 70 years of living a life, you could look back and said, yes, this is what I lived for. In the process, because you need to eat, you need to stay somewhere, you need to pay your bills, you need to support some people, you need to have money, and there are things that you need to do. So career, for just earning a living, I think is a waste of life. Most of us go through life without knowing, and we're chasing just the career. At least my generation. There are some very, very lucky ones who, knowing or unknowingly, doggedly pursued things that they thought would give meaning to their life. Whether it was learning to play an instrument, whether it was mastering a certain philosophy, whether it was becoming a poet or an artist, becoming an architecture and make fabulous buildings, or becoming a teacher, or becoming a scientist, or inventing a vaccine. Not because it will make you money.
creating a school where you thought that the kind of education you feel should be delivered must be delivered. So a much larger purpose. Your life is worth a lot more than just bringing a salary home at the end of the month. So long as you recognize it, I think you'll make a much larger contribution. If you don't, well, millions live through that. Millions live for that salary and then for that pension and then for that whatever and go through it. So it's not that you will not go through life, but a larger purpose is what will be worth it. Let me put it simply. So I guess we need to find that balance, and that is where values come from. You know, again, our community, we take great pride in the fact that within a generation of getting this genocidal flow in 1990, which is the latest, we sprung back with our children doing so well from tents in a camp to great apartments in big cities of this country and abroad. Okay, and bringing their parents out of it and achieving great material wealth and success. Because all said and done, our parents said, study, study, acquire a skill, acquire a degree, acquire a qualification, go compete. And this is what helped us survive through 500 years. When Sanskrit was abolished, we took to Persian like fish to water. We were such masters at Persian that we would teach Muslim kids Quran. Muslims would send their children to Pandits to learn Quran. They would appoint Pandits as Qazis to settle their disputes according to Sharia. Because we were scholars, we nourished knowledge traditions in Kashmir as part of our value system. I mean, I'll tell you, this is an incredible example how resilient your community has been. When patronage to Brahmins disappeared, when entire community was reduced to penury, poverty, deprivation, आप जंतरी लिख के नहीं पैसा बना सकते, आप ज्योतिष करके पैसा नहीं बना सकते, आप संस्कृत पढ़ा के पैसा नहीं बना सकते, आप गीता पर प्रवचन दे के पैसा नहीं बना सकते. तो क्या करें? कम्युनिटी ने कहा ठीक है, one part of us will get into earning the livelihood per se, and we call them Karkun. Karkun is a Persian word. It came with the Persian influence. We were left to penury. And one part of our community was designated to look after the rituals, to look after the tradition, to keep it going. That we will support you. You pursue this, don't leave this. You do the Shastra. You keep the knowledge traditions going. You keep the rituals going, keep the temples going, keep our Vorvod, Prepun, Puja, Marna, Jina, Sanskar, जितने जीवन से मरण तक संस्कार थे वो सब के सब निभाए गए. Because part of the community said, we will raise resources if patronage is dried up. This happened in the last 300-400 years. So our community minds were never at rest. They were always thinking ahead. And I think we should get to know our past, how our generations have progressed to this point. Commenting is good, is nice, but empathy, understanding is critical.
We must criticize ourselves. If we won't, who else will? But not to run us down. To rescue us from that situation. And you will do this only if you have a sense of belonging and ownership. You can't do this as an outsider lecturing people. You can only do this as an insider owning this up. I don't know, there are too many things that have been said and I don't know if I can address all of them. I think I should too much of hectoring in one session. I can leave some of it for the question answers in case you have any. But peer pressure, home environment, all of these are easy influences if you are not well grounded, period. If your understanding of the self is superficial, you will very, very soon become a victim of self-deprecation, self-flagellation, inferiority complex. And there are plenty of reasons to get all this because, yes, we've been through such times. Can you imagine people in 1990 did not want to be called refugees because they thought refugee was a very pejorative term. This guy was a refugee. As when you migrant. Migrant are the people who came on their own volition. We underplayed the crimes committed against us. We didn't tell our children what happened to us. And today we are called migrants. We were ashamed of, there is this is a psychoanalytical problem where the victim starts blaming himself or herself for the plight. Victim is ashamed of what is done to him or her. As opposed to getting up and fighting back, victim thinks that there was something wrong with him or her, which is why this has happened. Can you imagine a collective psyche of a community blaming itself for this? So when people say you ran away, you said, yes, we had to run away. Because 1 billion of you were impotents. Thank you. Thank you so much, Sushil Panditji. And he really became emotional while as in giving us so many profound insights. So this is basically what he wanted to tell us, that unless we claim that we hail from a community, unless we practice it, we cannot claim it. Right? So whatever he was saying, probably it was coming out of his heart, and that is why tears started rolling down his cheeks. So hats off to you, sir. You're doing, you have already done so much of contribution to the community, and it comes from your heart. So it is not like preaching and teaching only. And that's what he said, that you don't have to preach, you don't have to
teach, and you cannot preach and teach if you hail from a different community. You hail from this community, so you know much more about it, and that is how you can, as in, give your feelings out, convey your feelings to the other generations. Thank you so much, sir. Thank you so much. And there will be a question answer round also. I am sure that there will be many people who would uh, want to ask many questions from our speakers. But before the question answer round, I would request Raj Nehru ji, who is among us right now, Vice Chancellor of Shri Vishwakarma Skill University, because as Ajay Bhaiya has already talked about it, that he is going to launch an app regarding the demographics and all of Kashmiri Pandits. So I welcome Rajji on stage. And before that, I would like to, although Sushil ji, he doesn't need any introduction, but still probably what we have written, and I want to just talk about that, Sushil ji, if you allow me. All right. Thank you so much anyways. So Rajji, please, if you can come on the stage. So we have to just launch. So what we have done is, this issue has been bothering us for last couple of months since this group of people went together, and we decided that we will initiate a research project. There are two organizations. One is Whetstone Consulting. It's called Whetstone National Networking, and Shri Vishwakarma Skill University. We have a team of sociologists who are in the Department of Sociology, Psychology, and two research analysts, along with the team of Whetstone. And this team has worked together in designing a specific questionnaire, which would be now launched today. And through this questionnaire, we are going to work on understanding certain aspirations, expectations, experiences, and document them later and present them in the form of a research paper, analysis, and also submit that to the government with what is being recommended by this research for the community. So this is getting launched today. So I request all of you, wherever you get, Ajay and other people will be sharing with all of you. It has got 5 pages, some 20-25 questions. It will take you not more than 10 minutes. So if you can do the survey, maybe in the coming days, it will help us in raising our plight in a more data-driven, analytical, and research as a medium of understanding those issues. And maybe it can reach to the right quarters in the right manner. Thank you very much for launching this. Thank you, Rajiv. It will be going into the different groups where we can send it across the globe where our community members are present so that we get the data later on, it can be compiled. And we have one more information that on 10th of March, we're doing a conference in Jammu also, where youngsters can join us on 10th of March in Jammu, in Writers Club, just immediately after our holy festival of Shivratri. That youngsters join there. It's one more initiative. The youngsters should interact. They should deliberate all those issues and try to find out what's the way forward for all these issues we are facing. There's a great disconnect with the youngsters. And 10th of March is the next date where youngsters can meet in Jammu as well. 50 question answers. Certain questions should come so that Sushil ji can answer them. Curiosity is there. Question can I ask in this? Is go axis versus to Mars Nini. Yes, yes. Don't get hurt. Why to kill somebody for your case? Number one. Number two has the Shivratri Dochik Shul Karan message from a Bhutiya, which I totally disagree. Please kindly sir mention कि आपके पास काफी भंडार है विद्या का ये कौन से शास्त्र में लिखा है कि हम कश्मीरी पंडित है यार हम तो
किसी जानवर को मारना है और शिव जी को खुश करना है, आई डिसएग्री विथ इट. Let him answer that. I'm going to disappoint a few people. It will be a pleasure. See, to eat meat or not to eat meat should be your decision. Should be your decision. And if you start looking for a license to eat meat or restrictions on eating meat in scriptures, while you may find restrictions all over, you might find some license somewhere also. So at the end of the day, it is your conscience. कि आपने किसी जीव हत्या करके अपने स्वाद के लिए खाना है कि नहीं खाना है. Let's not seek some alibis in the Shastra. As far as Shastras are concerned, हमारे यहाँ 3 श्रेणी दी है खाद्य पदार्थ की, भोजन की. सात्विक, राजसिक, तामसिक. सबसे उत्तम आहार सात्विक माना गया है और उसके अंदर मांस नहीं है. राजसिक में भी मांस नहीं है. राजसिक वो आहार है, the food that you eat for a lot of taste related, satiating your, gratifying your taste buds, oral gratification. तामसिक में मांस है, मदिरा है. वो 3 आहारों में से एक आहार है, लेकिन वो वर्जित है. वो काम मत, उसको मत खाया कीजिए. उससे आपके स्वास्थ्य की हानि होगी, उससे आपके मानस की विचार की हानि होगी, और उससे एक जीव की मृत्यु होगी, उसकी जीवन की हानि होगी. तो ये तो साफ साफ कहा है. अब मैं आपको, अगर आपको बहाना चाहिए खाने का, तो मैं आपको जो उसके पक्ष में तर्क है वो बता दें. कश्मीर में तांत्रिक उपासना की पद्धति ने जन्म भी लिया, बलि बढ़ी भी. तंत्र उपासना में भैरवों की, शक्ति की उपासना होती है, और उसमें कुछ परंपराएं हैं जिसमें बलि देने की परंपरा भी है. और बलि देने की परंपरा में जीव हत्या हो जाती है. लेकिन जिसको तंत्र साधने हैं, शक्तियां सिद्ध करनी है, भैरव पुष्ट करने हैं, वो गाढ़वत रखना है, यश के लिए कुछ रखना है, तो चलिए वो भी कीजिए. लेकिन उसके चक्कर में फिर हम भी खाएंगे क्योंकि वो प्रसाद है, कर लीजिए. लेकिन जो 3 श्रेणियां हैं खाने की, उसमें ये ना सात्विक है ना राजसिक है, और इसलिए परिहार्य है, नहीं खाना चाहिए. मोटी बात ये. आई होप आई हैव. Very good. Namaskar, Maharaj. Am I audible now? Yes. What I said. Namaskar, Maharaj. Sushil sir, I know him very closely and have been watching him and all the other dignitaries and dais, my great young friends, and of course the Sanjay ji, a little closer to your. fabulous this audience. First of all, I just want to give a very, very big applause and hands. I want to request you to raise your hands for Ajay Padata Saab and his team for doing this wonderful, excellent meet. This is my 3rd time. You won't believe that in my mobile, I have met him some 7-8 years back. The first day I met him, maybe at Anandpur Sahib or somewhere else, I wrote on the very first day, the best from Kashmiri Pandit, resourceful man. And it still stays in my mobile. He may be among
amongst the very few people, human khadra mein chuluk best KP chuluk. All said and done, sir. There are few questions which are coming from our these young people, and it is our responsibility to answer them. I don't want to spend much time. I want to just very few minutes. I want to be very quick. The first thing, mix for a crucial to pay at in English. The first thing is that why on earth we should marry within the Kashmiri Pandit community? That is the first question for us. And whatever I say, I won't say something read from the books. I will say something which I have experienced myself in my life. Bumara varian nafran life and post migration outside the community. Memara पूछना है कि दिमाग में क्या logical mind पूरा पकान किया. अभी जमाने की ये तो जमाने यार समझ थार दिमाग. Memara चे इतना सन रहना सब कुछ मैंने दफ्तर पर चे तो बुझो जीवन तो बना साधन जमाने ये मन क्यों मन तरह फिक्री ना तो नहीं मन चाहे दिमाग में चाहे मन क्या पागलपन मन फिक्री तरह but they cannot think straight. So what I am trying to tell you, sir, in short, we should be very proud and we should be very thankful to our DNA, to our ancestors that we have been given the best genes and the best logical brain within us in the Kashmiri Pandit community. So we should try to marry within the community so that this logical brain goes through our progeny and future generations. This I am trying to from my own experience. Now the total people who are sitting here, there are two sets of people. One set of the people are who are part is pre-90 and part is post-90. And the second type of people are that who are post-1990. You know, as a questions, even as an answer to us do. That was my experience. I'm sorry, I'm engineering complete. Sanjay Khair now. Which was REC proper. हमारे हम सब your eye. Culture has to start from the home. अगर आज चुनाव की गई ऐसे गई ऐसे गई sure it is 100% wrong because the गलती जो ऐसे गई सुमारा गई इस पानस मिशन सुमारा गई ऐसे पानस गारसमत ऐसे हमारा हिचनों में तुमन सही चीज क्या युस हिचनाव युस टाइम जो आसान इस दोबा बड़ी तामसी आसान क्या इसकी हम साथ ये शूट जो आसान इस तमीर ताकन ऐसे मिशन सही हिसाब से मित्राउन पतमारा हेकन तमिसन 14-15 वरी पते हेकन तमिसन ऐसे हिचने थी पॉइंट क्या हमारा चीज को बना migration क्या करो? What is the big thing that Kashmiri positive thing क्या करो? आज हमारा core food code ऐसे use even which is पानस बनान कि यम साधन तक हमारा ऐसे पूरे बीचमुत ऐसे जाई गमत के my children have been born after 1990. So हमारा goes हर कुन जायन की एमन कैसे best school in the world में best school into Delhi में तुम्हारा जो पता कि DPS RK Puram is the best school in India, RK Puram, and you won't believe that कि मेकुसा कर त्याथमजन कोशिश कि त्याथमजन तमन admission ले, इसलिए you study ये मकोशिश बाटे चु तुमोत चुती कोचमुत बचमुत तुमोचु पानस इज़ा कुरुमुत तुमोचु पानस trouble से कुरुमुत मगर शुरन मारा चु तुमोतन टैटकने शुरन मारा जिसमत best जिसमत तालीम
So equally, the children should be thankful to their parents that they have given them best education. I feel that, I don't know, I leave the what do you call that, the judgment to you. That on both the aspects I told you. The third most important point that I want to tell you, which I have gone through and lived through, my younger son also, he wanted to have his own college. Where I took on own college. I took on. So I am an engineer. I told him that engineer. So the elder son heard me. Then chalo computer science kar do. मगर लॉकडाउन हमारा कोर्स थे, he did in Delhi University that same, he did that commerce. But then afterwards, you won't see that he went again into his calling, and then he did something. कल मैंने किया था ना तेरे को कि मैं आऊंगा शाम को, रात को 10:30 आज भी सला यही ऊपर उस सुमेर जी अब उसको बात गेट चलाऊंगा सारा विशान उसमें तो दीपक अच्छा अरे don't भरोसे on तो ओके बैटरी बात ना अजय भैया कांग्रेचुलेशन But kindly go by the need of the market. की आवाज अच्छा थैंक यू If I ask you whether you want to be a thermal power engineer, no. I have to be a renewable power engineer now, which is in demand of this time. Instead of you have to demand the person who does it liking, he is intelligent. But the person who connects his liking with the need of space, he is a smart guy. नहीं I feel that I am going to my. Thank you Thank you so much, Sanjay. Thank you so much. लाइट क्या Once again, thank you very much to the lovely audience over here. Thank you very much to all the lovely speakers. I literally got to talk about I was already proud of that. Thank you so much. Thank you for coming. Thank you for tuning in. Thank you, Archana. Thank you. All the best.